Mic check voice. Audible. I don't know if I'm audible. I'm not sure if I'm audible. एको आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है क्या? तो शक्ल बड़ी कर देते हैं। Just waiting for some people to show up. Echo? How is echo कैसे आ रहा है? I'm not sure. One second. हेलो 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 ठीक है यार, मेरे साइड से होती है। अभी भी एको आ रहा है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने साउंड सेटिंग मेरे को चेंज ही नहीं करी है। साउंड प्रॉब्लम ये बोए एको आ रहा है भाई आवाज़ में। हाउ इज दैट पॉसिबल? एको I don't know what the fuck is the problem here. Echo is fixed. आ रहा है echo अभी या नहीं आ रहा है? How is it possible? Echo कैसे आ सकता है? Low voice. तो mic थोड़ा पास कर लिया I think. Is it good now? I'm not sure if it's good now. Perfect. Why is it but it's Audio good है क्या यार? Please just tell me. Echo और volume दोनों बता दो यार if it's good or not because मैंने volume सही रखा हुआ है. Mic is closer to my mouth now and अभी कौन है? अब echo नहीं होना चाहिए. Increase the mic volume stream रखो. अरे है increased पाजी है. Kindly pause and lower the music volume due to which the voice is bit low. अच्छा ऐसा है क्या? Background music gone now. अब नहीं होना चाहिए problem. It's good to go, bro. बहुत लो आ रहा है ब्रदर. नो एको. म्यूजिक लो करो भाई. अरे कर तू. द म्यूजिक इज ऑफ नाउ. गुड टू गो. मॉड्स हैं क्या? जस्ट आर द मॉड्स इन द चैट राइट नाउ? कैन यू जस्ट एक मैसेज एक पिंग कर दो भाई. कुछ भी चलेगा. Abhishek and Dipanshu. Just waiting for the mods to just drop a text or something. How is it low? माइक बिल्कुल पास में है. Okay, अभिषेक is here. भाई मेरा नाम याद है क्या? Dipanshu is not here I think today. Or will he join? I'm not sure.
Just waiting for some people to show up. देख यहाँ पे लिखा आ रहा है विदु बेबी और यहाँ पे उस पे चैट पे लिखा आ रहा है बेबी कैरी मी. चुतिया चुतियापा. हेलो यार लोग आए भाई थोड़ा जल्दी. कोई नहीं अभी तो 10-8 ही हुए हैं. विदु माय बॉय. यो सर तो जल्दी आ यार. क्या चल यो एक मिनट यार मैं एकदम सेटअप कर लूँ यार. एक मिनट रुक जाओ. क्या व्यूअरशिप आ रही है. आई एम नॉट आई कांट सी इट मैन फॉर सम रीज़न. लाइक मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ 50. ओके प्री डिसेंट. लास्ट टाइम हम 80 हिट कर गए थे बॉयज़. 80 क्या आपने 100 भी हिट किया हुआ है बट ही कोई नहीं. 100 ऑल्सो वेरी क्लोज. स्ट्रीम क्वालिटी गुड है क्या बॉयज? कैन जस्ट एनीवन टेल मी इफ द माइक इज गुड. स्ट्रीम क्वालिटी वगैरह सब ठीक है? दो ही भाई. Go to live dashboard, edit your stream title, description. Go to live dashboard, edit your stream title, description. ठीक है 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. लेट्स जस्ट स्टार्ट इन 2 मिनट बॉयज. 2 मिनट और देखते हैं कौन आता है कौन नहीं. फिर एक मैच है. डिप्रेशन में चला गया. नहीं भाई जस्ट वेटिंग सम पीपल टू शो अप. अभी स्टार्ट ही किया ना इसलिए. बढ़िया. गेटिंग इन द जोन बॉयज. थोड़ा आज ब्रेक डाउन हो जाए. ठीक है. गांड मस्ती थोड़ा रोस्ट लाइक लास्ट टाइम मज़ा आया था भाई. लास्ट स्ट्रीम वॉज मैड यू नो. बहुत सही था लास्ट स्ट्रीम. आई एन्जॉयड अ लॉट. मतलब खतरनाक. तभी मैंने उसके अगले दिन एक और स्ट्रीम रख दी थी बट मैं फिर बीमार हो गया था. बट अदर देन दैट लास्ट स्ट्रीम में मज़ा आ गया था भाई.
फिग्मा भी थोड़ा कवर हो गया था एंड व्हाट एल्स यू डू, फिग्मा हो गया था और बकचोदी तो नेक्स्ट लेवल थी, रैंट भी हो गया था, स्टोरी वोरी तो मैंने अभी कवर भी नहीं करी, आई हैवंट इवन कवर्ड हाफ ऑफ माई स्टोरी एट, बट इट्स फाइन, थोड़ा बहुत हुआ उसको लेके ही काफ़ी यू नो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ गुड रिएक्शंस ऑन दैट, सो या उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बनेगा। ऑलराइट, ठीक है, अभिषेक इज इन द चैट आई थिंक, हाँ दीपांशु आई थिंक नहीं है, बट ओके इट इज ओके। एक सेकेंड, चैट बढ़ाते रहो भाई तुम, एक मिनट दो मेरे को बस। हाउस कोल्ड गैंग, कोल्ड इज गुड, ऑल गुड, एसी थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया था बट इट इज़ ऑल गुड, विद बॉयज ऑल ओके, मरा नहीं मैं। आज आफ्टर कवर करना है, कहना क्या चाहते हो? मनाई, ठीक है, इट्स फाइन। बाय द वे आई गॉट सम न्यू लाइटिंग्स, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ से लाइट आ रहा है, आई गॉट अ सॉफ्ट बॉक्स हियर, तभी यहाँ से लाइट आ रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइट ऑफ वर्सेस लाइट ऑन। ऑफ ऑन, ठीक है। लाइट स्पेसिफिकली इसलिए है, बहुत टॉकिंग एट कंटेंट आने वाला है, लॉट ऑफ टॉकिंग एट कंटेंट इज गोइंग टू कम अप, अ लॉट ऑफ यू नो YT videos, ठीक है, जो भी whatever topics we covered that day, that you know we'll cover a video on that, on this, on that, plana dimkana, etc. Okay, Instagram pe there's gonna come a lot of content, talking at content, so stay tuned। बहुत हो गया बहनचोद day 1 on After Effects, day 2 in After Effects, लौड़ा लसन day 1 of making SaaS video हो गया। अब थोड़ा सा शक्ल वकल के साथ काम करेंगे अब, ठीक है। कह रहा ऑफ ही कर दो लाइट्स, हट, नहीं लिया यार, थोड़ा यूज तो करें। इसमें आरजीबी बहुत भांग बोल रहा है भाई, आरजीबी वाला करूँ क्या, कभी दिखाऊं, तो मूड बना के ऐसे ब्लू लाइटिंग में बैठते हैं भाई। आई मीन दिस लुक्स कूल, आई मीन फॉर सम रीजन, ऐसा बूल ऐसा अच्छा माहौल हो रहा है भाई, इट लुक्स गुड, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। एक पीछे वाली लाइट ऑन करता हूँ, एक मिनट रुकना। हाउ डज दिस लुक नाउ? I mean, it definitely gives a good लाइट के बिना भी चिकने लगते हो भाई, लाइट के साथ भी चिकने लग रहे हो। अबे है तो है यार, क्या करें, लाइक आती नहीं है दाढ़ी तो। इट इज कितने की ली भाई? इट वाज आई डोंट नो, इट वाज 4-5,000 समथिंग रुपीज, इट्स अ की लाइट, 4-5,000 की थी। और क्या कर सकते हैं आरजीबी में? आई थिंक इसका टेम्परेचर वगैरह भी चेंज हो सकता है, तो ये एकदम ऐसा वो डार्क ब्लू काइंड ऑफ लाइट हो रहा है अब। एक सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग आउट ऑल द मेथड। ये थोड़ा पर्पल हो गया, और क्या हो सकता है? और चल काके, वो हाँ ये पिंक हो गया, ये मेरा ब्रांड कलर आ गया है अब। ओके हाँ, दिस इज द ब्रांड कलर, ये ब्रांड कलर आ गया, थोड़ा पिंक का भी शेड आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी कूल बाय द वे। और देखते हैं, ये और पिंक हो गया, इट्स मोर सैचुरेटेड, यू नो, आई डोंट नो हाउ इट लुक्स, बट ये थोड़ा सा और रेड, वी हैव रेड हेयर, डिफरेंट मूड्स के हिसाब से डिफरेंट लाइटिंग ये करेंगे, ठीक है। थोड़ा बकचोदी रोस्ट मोड में घुसेंगे तो एकदम से रैंट मोड चल रहा होगी, मैं गांड मार रहा हूँ किसी की बैठ के, तब मैं रेड लाइट ऑन करके वो डेवन जातो वाला कर दूंगा, नेवर एवर, और पीछे रेड लाइट एंड चौथ। और क्या कलर है यार, और आरजीबी ट्राई मारते हैं। ये थोड़ा ग्रीन में आ गए हम लोग, आई मीन दिस ऑल्सो लुक्स गुड, ऐसा नहीं है। रेड फॉर डेवन, हाँ एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ। और ये तुम्हारा थोड़ा ब्लूइश में चला गया वापसी, ये तुम्हारा ब्लू लाइट आ गया, डन। व्हाट एल्स, और ये कर सकते हैं इसमें, और बहुत
बहुत भांग उड़ रहा है भाई इसमें, बहुत सारे मोड्स हैं, इतना क्या टेस्ट करें, बट ठीक है, लेट्स गो टू आवर ओजी वार्म वाइट। गुड डे, डू ब्लू एंड यू विल गेट अ गुड वाइब। यस, कर सकते हैं। पहले से पिंक है और कितना पिंक होने वाला है। आई मीन हाँ, ब्रांडिंग ही पूरी पिंक है यार, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो लाइटिंग में भी मूड थोड़ी कर रहे हैं, पिंक पिंक डाल रहे हैं नो, अप टू द ब्रांड, यू हैव टू स्टिक टू द ब्रांड। क्या चश्मा भी ऐसा पिंक पिंक है पूरा, इतना मस्त लग रहा है, बढ़िया। ब्रो ब्लैक लाइट लगा दो ना ब्रो, वही रखो ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड बैक लाइट। हाँ, ब्लू एंड बैक लाइट अच्छी लग रही थी टू बी ऑनेस्ट, आई मीन वी कैन डू दैट, ब्लू करके and just have a backlight to it. How does this look? ऐसा ब्लू का पूरा एक ऐसा शेड आ रहा है एंड देन ये तुम्हारा पौधा मेरा यहाँ पे लाइट अप हो रहा है। How does this look? This one looks I think much interesting, I feel थोड़ा सा ऐसा मस्त वाइब दे रहा है। ब्लू वेल ना बेटे, चैट स्किप हो रही है आज, आई एम नॉट, आज थोड़ा ध्यान से मैं चैट नहीं देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमेशा देखता हूँ धड़ाधड़ चैट पढ़ता रहता हूँ मैं, बढ़िया लग रहा वोई क्रेजी डन ऑन परफेक्ट। ये सब थोड़ा माहौल बनाया, थोड़ा सा रिड्यूस बैकलाइट इंटेंसिटी, भाई वो स्पॉटलाइट है उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो सकती है। एडिटिंग से अर्निंग कंसिस्टेंट मैंने होगा, मोशन डिज़ाइन में ट्रांजिशन कर रहा हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट, तो कितना टाइम लगेगा टू अर्न 1 to 2 लाख रुपीज़ पर मंथ? बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत कांड पार्ट टाइम। ब्लू एंड येलो कलर थ्योरी, यू नो, आई नो, सही जा रहा है इनफैक्ट। इस साइड मेरे लेफ्ट साइड में पूरा ब्लू है, यहाँ पे राइट साइड में पूरा ब्लू का इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हैं आई फील थोड़ा सा, और लेट्स टेक इट टुवर्ड्स अ बिट मोर ब्लूइश टोन। ये तो थोड़ा पर्पल जा रहा है, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, और आई थिंक इतना ठीक है, दिस वंस बेटर, आई थिंक साइन की तरफ जा रहा है। ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं बट आई डोंट थिंक वी नीड ब्राइटनेस, ठीक है, ऑल कूल। W3 एडवांस 3D और एलिमेंट 3D विच इज बेटर? हाँ, एडवांस 3D एलिमेंट 3D, एलिमेंट 3D what the fuck is, अच्छा एलिमेंट 3D वो आफ्टर इफेक्ट्स वाला एलिमेंट 3D मैंने यूज किया है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज I can't say that it's damn good, but I feel अपना जो एडवांस 3D है it's good enough. एलिमेंट 3D थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक 3D सॉफ्टवेयर जैसा चला जाता है, बट या आई पर्सनली फील एडवांस 3D इज गुड इनफ। डिजाइनर थिंग, यस सर। ब्रो डू यू ऑल्सो एडिट टॉकिंग हेड वीडियोज? आई स्टार्टेड विद टॉकिंग हेड वीडियोज, ऑलराइट, मैं अपना करियर ही टॉकिंग हेड वीडियोज से स्टार्ट किया है। God's Child 777. भैया डू यू डू काउंसलिंग? आई डू काउंसलिंग हेयर इटसेल्फ, यहीं पे ही होती है काउंसलिंग सारी, यहीं होती है, गांड फाड़, मतलब कोई फालतू बकवास करता सी गांड में मार ली जाती है, एंड एट द सेम टाइम कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन भी आंसर हो जाता है, सो इट्स ऑल कूल। एंड नो, आई डोंट डू पेड काउंसलिंग एंड शिट, एवरीथिंग इज फ्री, यहीं पे होता है। किसी दिन कुछ अगर 1-on-1 वाला कुछ पेड निकालना होगा तो निकाल देंगे, वे यू पे मनी फॉर सम counseling, but right now that doesn't exist. जो भी होता है it happens on the live stream. भाई कैप उतार एक बार, अरे बाल लंबे हो रखे हैं यार, इसलिए जस्ट टू यू नो थोड़ा सा समेट, नहीं तो बहुत ऐसे दिक्कत होती है, बहुत मेसी बाल आते हैं, इसलिए जस्ट कीप माई हैट ऑन। प्लस आई लव दिस कैप,
मस्त है. और ऐसी मंगाई है 3-4 सो नई कैंप्स ऑल्सो. बट वी ऑल्सो एट टॉकिंग. लेट्स गो. बस कर. आज जल्दी शुरू करते हैं भाई. चलो आज सी हमने जल्दी शुरू किया है. इफ थिंक अबाउट लास्ट टाइम तुम बहुत लेट हो गए थे एंड स्टिल कितना खतरनाक स्ट्रीम निकला था भाई कल वाला. उस कल वाला कह रहा हूँ जो लास्ट वाला था. तो लगे बैंक चौथ आई के भाई चमकने वाली लाइट लगाओ ना एक बार. चमकने वाली कौन सी है? यही तो है जो है चमकने वाली. येलो वाली थी, वार्म वाइट थी वो बस. यार मिनिमम पीसी एस्पेक्ट क्या टू स्टार्ट मोशन डिज़ाइन? हाँ कहाँ गया? In what basis you write script, man? I don't know. बस थोड़ा AI यूज़ कर लिया, थोड़ा अपना खुद का क्रिएटिविटी यूज़ करा and that's how I write scripts. Not a big deal. Do you prepare all your scenes into single composition or make them separately and bring them into master composition? Sometimes yes, sometimes no. My regular therapist. Bro, creativity पे video when? Yes, very soon. ये सब all of this is happening very soon, by the way. So just hang tight, boys. I think this week or next week everything will be out. सब बाहर एकदम दड़ा पोस्ट होना YouTube पे शुरू होगा. So just hang tight. होने वाला है सब स्टार्ट. मतलब ये लगा लो तुम. Bro, do you remember your first client? How was that feeling? First client, yes, I remember my first client. In fact, it was like मतलब that sense of relief and excitement कि damn I did it. मतलब when I got my first foreign client, वो कहाँ का था? I even remember his name also. I think his name was Emmanuel or something. His name was that, and he reached out to me. He wanted a talk. He wanted a faceless. What do you call? Faceless video. Okay, full emotion. And I charged him. I think I charged him $15. $15 for the first edit, and he was like, "Oh yeah, please have it." And he paid the full amount. He didn't even what do you call it? He wasn't even like, "I'll pay you 50-50" and everything like that. He just paid the whole thing. He paid the whole amount, and we started working. And I cooked that video. That video got 15,000 impressions on Twitter, and that was my I think a very recent post on my Twitter. Not recent as in, it was like one of my first posts on Twitter. And at that time I had, I think, 50 followers. So not even 50, less than 50 followers. And yeah, I mean, that video blew up. I got 15,000 impressions of that video, and that's where I started my whole journey of working with foreign clients. So yeah, the feeling was amazing. The video worked out well. It was excitement, it was anxiety, everything was there, but all worth it. भाई मैंने इतनी बकवास कर दी बहन चो. हाँ ये रहा. ब्रो क्रिएटिव शुरू किया जाए. यस, कैन वी स्टार्ट बेब्स? यस. तो नहीं, वीडियो कब तक आ सकती है? बस नेक्स्ट वीक पक्का. पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता विद बॉय. यस सर, वेरी ट्रू. भाई सेकंड लाइव अपलोडेड क्यों नहीं है? बंदी के साथ नाइट आउट पे था तो देख ही नहीं पाया. तेरी गलती. बंदी के साथ घूमता है साले. यहाँ विद बॉय लाइव स्ट्रीम कर रहा है और वो बंदी के साथ घूमता है. स्टोरी लगा की आपकी लाइफ का. मेरी लाइफ का स्टोरी हो. क्या बात है. विद बॉय कोल ठीक हुआ क्या? यस सर. भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3-4 आई थिंक. बकचोदी कब शुरू चल रही है? मे भी आपके बुखार कैसा है? पैरासीटामोल लिया क्या? इतना भी गंदा नहीं हुआ था कि पैरासीटामोल लेना पड़े. बचिया. बाय फिग्मा से डायरेक्ट एई में लेयर शिफ्ट कैसे फोटोशॉप में एई कैसे एई में करते हैं क्या? भाई फिग्मा से डायरेक्ट एई में लेयर शिफ्ट कर सकते जैसे फोटोशॉप से ही. हाँ और क्या, ओवरलॉड यूज़ करना. ब्रो क्या तुम्हारा इंस्टा का वीडियो रिक्रिएट? यस गो फॉर इट. तुम परमिशन की बात करो. इतने टट्टे हैं बिना परमिशन वीडियो रिक्रिएट कर रहे हैं हमारी. तो करो, कोई सीन नहीं है. परमिशन ले लो, वही बहुत बड़ी बात है. गुड, गो फॉर इट. हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स? इट गेट्स डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट हैंडलिंग मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स. आई मीन स्पेशली
you get active on one account, then you forget about the other account, okay? And then you get active on the second account, but then your main account suffers. So, and I have 3, all right? In fact, I have 4. I have LinkedIn also. So it gets a bit difficult, but you have to consciously and be very aware about your whole, what do you call, your socials, and be wary of everything. If you seriously want to go into content creation stuff, उसके लिए तो करना ही पड़ता है भाई, मतलब सब पे आपका पकड़ होना चाहिए. ये थंबनेल खुद बनाया है? नो ब्रो, शाउट आउट टू आदित्य, माय थंबनेल गाय, उसने बनाया है. Actually, I'm new to all this and confused too what to actually go for, because I don't come from tech background, but hell a lot interested in making design stories, animation, filming and stuff. But अच्छा, ठीक है, just I think you need to start with learning editing first, and then slowly diving into motion design using After Effects, Adobe After Effects. Okay, I would suggest just watch my roadmap video. I've covered everything in that. There's a live stream which has the whole motion design breakdown. Sorry, not the breakdown, fuck hell. Roadmap. So you can have a look at that also. And roadmap पे वैसे भी dedicated video आने वाला है, so just hang tight. भाई कमेंट का आंसर बहुत देर के बाद हो रहा है या अपने पास लेट जा रहा है मैसेज. आई थिंक देयर माइट बी सम स्ट्रीम डिले, आई एम नॉट श्योर. डू यू वर्क ऑन यूआई एंड वेब मोशन डिजाइन और दैट्स अ डिफरेंट फील्ड? थोड़ा सा डिफरेंट है. द फील्ड इज अ बिट डिफरेंट. देयर आर सम एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू यूआई, देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु आर थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन वेब मोशन. ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो डू वेब मोशन, बट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा. Don't know what, where, how, you're confused. Chill, it's very easy. Start editing, then get into motion design. Dipanshu is in the chat, boys. मुझे लगा था आज आएगा ही नहीं गांडू, but in the chat, W is in the chat for Dipanshu. वेदू बॉय फिग्मा कब सिखाओगे? फिग्मा सिखाना है? नेक्स्ट टीम के पहले तुम्हारा 3 SaaS वीडियो रिक्रिएट करूंगा. कर दो. ओ भाई, एक सेटअप टूर वीडियो बना दो, कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा और हमें भी स्वाद आ जाएगा. गुड आइडिया. और मैंने ये नोट भी किया हुआ है, सेटअप टूर होगा. चैट, आई एम टर्निंग 24 टुमारो, माय बैक हर्ट्स. लेट्स गो. मतलब 12 बजे भाई दीपांशु का बर्थडे, याद रखते हैं भाई, ठीक है? 12 बजे ही है ना? एक बार बता दियो भाई, कहीं मैं चूतियों की तरह करवा दूं. वेदू इज माय प्रोफेशनल खान्स, पर्सनल खान सर. Can we call uncle and Uncle Dipanshu? How do I grow on X? I keep posting but I'm not getting any. Keep posting. और एनालाइज करो यार, अच्छे पोस्ट जो चल जाते हैं उनको एनालाइज करो. सी व्हाट दे हैव डन एंड या अपने में भी इंटीग्रेट करना शुरू करो. भाई कोल्ड ठीक करने के लिए पैरासीटामोल को क्रश करके रोलिंग पेपर से इनहेल कर लो. दैट इज अ डिफरेंट पैरासीटामोल माय फ्रेंड. दैट इज अ डिफरेंट पैरासीटामोल. भाई ब्रो, डिड यू एवर फील लाइक दैट यू हैव टू लर्न बिफोर पिचिंग the first client? I mean, you do need to do a background check. You should do a background check. Learn about the company. Okay, उनकी वेबसाइट पे जाओ, पढ़ लो उनके बारे में, what do they do and everything, what services do they provide. Okay, get a sense of what are they and what they might need from you. Okay, it leaves off a good impression. I'll say that. VIT की याद आती है कि बेबी, थोड़ी थोड़ी मारी. Where do you find VSL video? I'm not getting VSL clients, to be very honest. I did get a VSL client quite recently and his budget was very low, like very low. So I'm like, yeah, march the bench. Should I join paid courses? Because I think self-learning material is saturated. You're saying self-learning material is saturated. भाई, इस बंदे घोस्ट राइली को कोई ये बताओ, मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम देखे, उसको सारा कोर्सेज के बारे में उसे सब पता चल जाएगा कि मेरा क्या ओपिनियन है कोर्सेज को लेके. एंड ही सेइंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल इज सैचुरेटेड. ब्रदर, यू आर वेरी रॉन्ग. वेदू भाई, कल्ट गैंग के लिए 2 लाइंस यही है, बैंक चोद देंगे सबकी, कोर्स वालों की तो. Bro, did you ever feel like that you have to learn motion more before pitching the first client? Like, I'm not ready to get my client or something. Arey, go for the first client. You don't have to be so. You can learn on the way. Okay, don't worry about it. वेदू बेबी के पास LinkedIn Premium है, so rich he is.
भाई पैसा कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, अपने में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है, अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करो, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इन सब में इन्वेस्ट करो. Did you get the clients from LinkedIn? Did you get the clients from LinkedIn? Not really. तुम्हारी खट्टी सी गाली हो जाए प्लीज. कैसी कैसी रिक्वेस्ट आती है. रुक जाओ भाई, खट्टी मिट्टी सारी गाली दे दूंगा, 2 मिनट दे दो. जब मैं ब्रेक डाउन करना शुरू करूंगा ना, फिर मैं मूड में आ जाऊंगा थोड़ा सा. भाई इंस्टाग्राम से क्लाइंट मिलते हैं आपको बहुत कम, बहुत कम. Bro, you look very different from your 7-month-old live stream. Looking much younger. Looking much younger. I am looking much younger from my older self. That is the younger self. Let's go. Woo! सही जा रही है डाइट, इसका मतलब. स्टार्ट करो भाई, डाइट को खत्म हो गई. मैं तो लाया ही डाइट को आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर बढ़िया अभी करते हैं स्टार्ट 5 मिनट. भाई चैट अब आना शुरू हुई है, 60 व्यूअर्स हैं. अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है. लेट्स गो, लेट्स गो. विधवा डाइट को किधर है? आज डाइट को किया यार, सैडली. हाँ, फिग्मा स्टोरी बोर्ड इन डिटेल सिखा दो भाई. यस सर. ब्रो डू यू हैव पोर्टफोलियो वेबसाइट? व्हाट्स द एड्रेस? सर्च runelabs.studio. यो कैन वी स्किप रीडिंग चैट्स प्लीज? साले तेरी चैट आंसर हो गई तो मैंने लगा पड़ा है कि मैंने हटाओ इन मादर चौदह को, शुरू करो. हैं, वेयर डू यू लर्न फ्रॉम? वाज इट सेल्फ और एनी कोर्स ऑन YT और YT, एंड लाइक व्हाट्स योर aim, money you're creating? I learned it on my own, no courses. My aim is to keep my creative self alive and do whatever the fuck I want and create whatever the fuck I want, at the same time earn money from it. ब्रो कॉलेज लाइफ की कोई गाड़ मस्ती जिसके बारे में सोच के आज भी रिग्रेट होता? कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता. बहुत मजा आया था. सबको कॉलेज जाना चाहिए. यो बॉय, आई एम बैक. ब्रो नेक्स्ट स्ट्रीम से पहले 3 वीडियो रिक्रिएट करके रखूंगा. वेरी बिगिनर इंस्पायर्ड बाय लव यू ब्रो. ऑलराइट, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट. लाइव रिकॉर्डिंग में वेदू बेबी थॉट्स ऑन M5 अल्ट्रा. M5 अल्ट्रा, M5 अल्ट्रा भाई. M5 अल्ट्रा मतलब एप्पल का सबसे खतरनाक पीसी सिस्टम होने वाला है. अगर है तो अभी रिलीज कहाँ हुआ M5 अल्ट्रा? और दे मोदी को वोट. रैम प्राइस के बारे में कुछ बोलो. माँ चुद गई भाई. जिन जिन के पास पीसीज हैं उन सबकी माँ चुद गई. इनफैक्ट सबकी माँ चुद गई, क्योंकि रैम चुदेगा तो सब चुदेंगे. रैम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है. विदु भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूजिंग सीन्स फ्रॉम इन्वाटो एलिमेंट्स? माँ चुदाओ तुम इन्वाटो वालों. भाई हैंडसम हो, आई नो राइट. चिकना बॉय BTS, व्हाट्स योर एज? चैट ट्रांसलेशन बंद करो लाडले. अरे यार दिमाग में मैंने पिछली बार भी किया था, मैं अभी फिर से डबल चेक किया और बंद है. बट पता नहीं क्या हो रहा है, चैट बंद ही है ट्रांसलेशन. अब ये फिर से क्यों हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है. ड्रॉपिंग अ क्रेजी कॉन्सेप्ट एनिमेशन वीडियो टुमारो, विल शेयर. ऑलराइट. सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम एक्सटर्नल. ब्रो आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट SaaS एडिट एंड पोस्टेड ऑन लैक्स मोशन. यू कैन सी इट. टेल मी. करेंगे भाई, एडिटर भी करेंगे. ट्विटर पे 1-2 व्यूज आ रहे हैं. बहनचोद क्या करूं, कितना कंसिस्टेंट पोस्ट करूं. करते रहो, काम भी इंप्रूव करो एट द सेम टाइम. ठीक है, थोड़ा काम भी इंप्रूव करो भाई. एपिडेमिक का कोई फ्री ऑल्टरनेटिव? आई डोंट थिंक सो. और एपिडेमिक से खतरनाक चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती. आई फील एपिडेमिक बहुत बढ़िया है. भाई ये चश्मा कौन सा है? स्क्रीन शेयर करके बताना या फ़ोन पे शो कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा. मुझे खुद नहीं पता यार कौन सा वाला है. ये वो ब्लू लाइट वाला है. थोड़ा मैं ब्लू लाइट से बच के रहता, आंखों में स्ट्रेन कम पड़ता है इससे. हाय भाई, याद हो क्या? वेदांत स्टडीज मेरे नाम से अकाउंट खोल रखा है साले तूने. लुक्स मैक्सिंग टिप्स. जिम जाओ, डाइट करो, पानी पियो. दैट्स ऑल यू नीड. ब्रो स्किपिंग माय कमेंट, सॉरी. If this world was and I want to be next to you. Bro, I have completed my first 100 and posted on. ए स्पैम मत कर. जिसने फ्री प्रोमो करा हंटर पड़ेंगे. प्यार से, प्यार से नहीं, गांड लाल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. स्पैम करा तो गांड लाल कर देना, कोई सीन नहीं है. फुल परमिशन. तेरा भाई M5 अल्ट्रा लेगा और 500 नल ऑब्जेक्ट बनाएगा. बना बना. आफ्टर इफेक्ट्स तब भी चुदेगा क्योंकि वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है गांडू. हाँ करा था पिछली बार, हो तो गया था फिर. हाँ वही तो मैंने किया था, पता नहीं क्या सीन है ये फिर चालू हो. पता नहीं, मैंने अभी फिर से देखा, बंद ही पड़ा है. एक मॉडरेशन.
मोदी का मंदिर बन रहा है पटना में, 12 करोड़ की सोने की मूर्ति आएगा। चुतिया आप। मेरा दोस्त 1 लाख रुपए देके 40-50 ले रहा है। अबे 40 इतना पुराना बहन चो, 56-50 की रेंज आ गई है, कहाँ 40 पे पड़ा हुआ है भाई। कैक्टस काट दो लौड़ा। ब्रो साउंड इफेक्ट्स के लिए बेस्ट एपिडेमिक एनवाटो बोटानिका। भाई साउंड इफेक्ट्स तो बोटानिका के सबसे खतरनाक है, पर दिक्कत ये हो रही है अब सब बोटानिका वाले यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बेचारा सैचुरेट हो रहा है। तो या तो बोटानिका वाला नया वर्जन रिलीज करे, या फिर आप अपने खुद के ढूंढो एपिडेमिक वगैरह से। सेव प्लेलिस्ट प्लीज। यार ये सेव प्लेलिस्ट वाला फिर आ गया, मैं भूल गया कौन सी सेव प्लेलिस्ट। भाई कहीं अमीनाबाद से तो नहीं लिया ये चश्मा? वो कहाँ है? पेड़ की तेरा भाई सिनेमा 4D सीख रहा है नाउ विद गॉट कंपटीशन फ्रॉम मी। भाई सिनेमा 4D सीख रहा है फिर तो तू जा ना मार्वल वार्वल में जा भाई, मार्वल वहां पे नौकरी ले भाई, यहाँ क्या कर रहा है? वेदू पे भी स्टार्ट कर दे अब। हाँ बस 2 मिनट दो भाई। आपने फ्लेक्स GUI प्रो ट्राई किया? मस्त ट्राई फॉर AE। हाँ हाँ पिछली बार बात हुई थी इस बारे में, करेंगे ट्राई। ब्रो yesterday bought a second hand RAM from another city, only had 8 GB upgraded to one more 8 GB. Fun fact, just got it at 2000 rupees. भाई वो तेरा सिस्टम भी चोट देगी, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ जिम पियो डाइट जाओ, वर्क द होम, दैट्स व्हाट यू मीन। ब्रो एज क्या है? दिल्ली से हूँ, कब मिले फिर? भाई सून क्रैश होगा भाई तगड़े वाला। एग्जैक्टली क्या बेस्ट है ब्रो 1 लाख बजट में आफ्टर इफेक्ट्स के लिए? 1 लाख बजट में तो गेमिंग लैपटॉप ही लो भाई, विंडोज वो भी। आई गॉट एपिडेमिक फॉर 4000 INR ऑन द रियली प्लान, टोटली वर्थ इट। यस वेरी 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 वर्थ इट। लाइक एपिडेमिक सस्ता कितना है यार, बहुत, इट्स वेरी चीप। एपिडेमिक बेटर, यस 100%। सेव प्लेलिस्ट मेरे से मांग रहा है लगता है, दे दे यार, अगर मांग रहा है दे दे भाई, तेरे पास है तो सेव प्लेलिस्ट। ब्रो एक PC एस्पेक्ट बताओ टू स्टार्ट मोड। अरे यार तुम भाई गेमिंग लैपटॉप लो भाई, उसमें स्टार्ट करो। हमने भी गेमिंग लैपटॉप में ही स्टार्ट किया था, 60,000 के लैपटॉप में स्टार्ट किया था मैंने। भैया लाइक कैन मोशन डिजाइन बी डन एज अ फुल टाइम करियर? लाइक एनी प्रोज कॉन एडवाइस रिलेटेड टू दिस? यस मोशन डिजाइन कैन बी डन फुल टाइम। आई एम डूइंग मोशन डिजाइन फुल टाइम मैन। आई मीन आई एम अ फुल टाइम फ्रीलांसर you can say, alright? And if you're good at what you do, if you have that creativity, if you have that strength, taste, sky is the limit. I swear, sky is the limit. So yes, anything related to creativity रहता है, फ्यूचर होता है उसमें अच्छा खासा। ग्राफिक डिजाइन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है आजकल, बट मोशन डिजाइन तो बहुत खतरनाक चल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट ब्रो। एक भाई एडिटिंग के लिए बेस्ट बजट हेडफोन्स रेकमेंड। यू डोंट नीड हेडफोन भांग भोड़ा इतना नहीं चाहिए, नॉर्मल ईयरफोन्स यूज करो, कोई सीन नहीं है भाई। सेटअप रिवील कर दो आज। M3 अल्ट्रा कैमरा वैसे घुमाना होना पड़ जाएगा, भांग भोड़ा हो जाएगा। होम फ्रॉम वर्क भाई। आज रेडबुल का सुपर चैट का काफ़ी ट्राई किया बट डोंट नो भाई। आज रेडबुल का सुपर चैट अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहीं ग्लासेस तो नहीं लिया, डाल ले ना बेटा ना। अब थोड़ा लेवल उठ गया है मेरा, थोड़ा सा उठ गया भाई। मैक मिनी ले लूँ भाई? मैं तो मना करूँगा, मतलब मोशन डिज़ाइन के लिए तो मत लो भाई। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लोगो या मोशन डिज़ाइन सीखूँ? दोनों चीज़ों में मास्टरी है अपनी, बढ़िया है फिर तो मोशन डिज़ाइन करो भाई। वेदू भाई बकचोदी बहुत हो गई, एक गाली देके शुरू करो। हट बेंच अरे चोद, गाली सुनना आया यहाँ पे बैठ के हैं। मैक नुन्नी ले ले थॉट्स ऑन AE ऑन PS5? नहीं भाई PS5 से दूर ही रखो भाई इन सब चीज़ों को भाई, प्लीज़ भाई। आपके फ्रेमर पोर्टफोलियो का टेम्पलेट मिलेगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? मुझे खुद नहीं पता कहाँ है वो बेंचो। ईयरबड्स ले ले, बजट्स डोंट मैटर दैट मच। 5K ईयरबड विल साउंड सेम एज 1K इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग। आई हैव बोथ, एग्जैक्टली, इट विल बी द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लगे रहो लाडले। 70 वॉचिंग स्टार्ट। ठीक है। ऑलराइट बॉयज, आफ्टर इफेक्ट्स खोल लूँ तो ये थोड़ी मारी पेड़ दी तेरी दी। एक सेकेंड भाई, गोल सेट कर दें क्या? अरे माच होता है गोल।
कोई करता तो है नहीं भोसड़ी का. एक सेकेंड आफ्टर इफेक्ट्स खोल लूँ भाई. हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स खुल गया है. स्ट्रीम लैब्स कहाँ है? हाँ ये रहा. एक सेकेंड. हाँ. एनीवेज बॉयज, टुडेज एजेंडा. आज तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा. तुम्हारी गांडों में से जो खून निकलने वाला है, तुम्हारी गांडें फटने वाली है, ठीक है, चड्डी गीले होने वाली है, बॉन्ड फटने वाली है. क्यों? क्योंकि टुडे वी हैव द वेरी बैडली रिक्वेस्टेड एंड एंटिसिपेटेड एंड डिमांडेड SaaS ब्रेकडाउन का पार्ट 2. वाई? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम वी कवर्ड द फिग्मा of this project. Let me show the Figma as well, just for your recap purposes. फिर उसके बाद then we'll go through the whole animation, what I did, how I did, why I did it, and you can ask the questions. I can answer those questions regarding this breakdown, and this will be uploaded as a dedicated YouTube video as well. So you will have a SaaS breakdown YouTube video as well. So आज तो मौज होने वाली है पैन चोद. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर द फिग्मा स्क्रीन एज वेल सो दैट यू गाइज हैव अ रीकैप एज टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेश. आई कवर्ड इट वेरी क्विकली, सो या आई जस्ट फॉर ब्रीफ रीकैप पर्पसेस. पैन जो मेरी स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही पोफड़ी. अब हुई ना? आहा, मजा आया. एक सेकेंड, फुल स्क्रीन कर दूं. हाँ, अब तो दिख रहा होगा. शक्ल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा. आई फील मेरे को थोड़ा नू लेके एथे यूं वहां पे रखने था. ठीक है, ऐसे भी ठीक है. नो सीन. ऑलराइट, this was the Figma board that I shared last time also. Yeah, Figma mein I have designed this storyboard. This was designed like fully in Figma, by the way. All of this was done in Figma, like natively in Figma. All right. And then we just took each and every element separately to After Effects to animate. Okay. This was the storyboard. I think we covered the storyboard in the last session. Let's go to the animation this time because animation भी तो करनी है और animation ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी. आई मीन स्टोरी बोर्ड भी बहुत जरूरी होता है, बट उसको एनिमेट करना, करेक्टली एनिमेट करना इज इज इक्वली इंपॉर्टेंट आई फील. ऑलराइट, सो आई जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट वाज इन हिब्रू. ओके, हिब्रू ईरान इराक पता नहीं कहाँ, ईरान की लैंग्वेज है. ओके, और ये किसी हिब्रू क्लाइंट के लिए था ये प्रोजेक्ट. सो व्हाट आई डिड वाज इनिशियली I had a voiceover in Hebrew. All right. Now this is a tip if you're working with clients who natively have a different language than English. All right. So this guy had Hebrew language as his main mother tongue. So the project was again in Hebrew. So this voiceover, this is the voiceover by the way. These layers are the voiceovers. These are the dialogues cut separately so that just for ease purposes. All right. What I did was I just marked their English translations as markers like this. Right now these markers are very offset because while I was working through the project, I like fiddled with them a lot and some gaps were created. So some markers were misplaced and everything. So just don't pay that much attention to these markers. I'm just telling you what the context of these markers is. All right. Okay. We start with the voiceover. Okay. Then we started with the first animation. The main dialogue of this part was high employee turnover, as we saw in the Figma also. So in Figma also we designed this grid. We wanted to do this grid animation. All right. How I did this? Basically, as you can see, these are all different images. See image
image, all right. These are all image, and I had a mask over them as well. Can't see it. For example, this mask. Yeah, I think this was the shape. This was just a mask to have them all in square shape. All right. Okay. Now, first effect that I'll break down is this colorama thing that is happening. It's a very simple effect. All right. Let me just show you. Here pe colorama I've put on colorama. All right, and I have keyframed the. Yes, I have two. No, I have multiple keyframes. For colorama, I have one keyframe only, which is blend with original. What blend with original does is when it's on 0, whatever color palette you have set in the output phase. Okay, I chose three colors up to the brand palette. For example, this was the primary color. Then I used coolers like I showed in the last session also. I used coolers and generated 2 extra colors, okay, which will go with this color. I linked them here in colorama in the output phase and tweak them a bit. You can just, just pay attention here. Just pay attention here. What is happening? Without colorama, this is normal. With colorama, all right. Okay, see, I can adjust the palette like this, something like this. Cycle repetitions is also something that I animated. Okay, for example, just double click on this, like whichever properties you want to see the keyframes on the main layer, just double click on that property and this will open up. You'll see the exact keyframes. Okay, so initially I had, I have multiple keyframes. Okay, never mind. So I also animated the cycle repetitions. Cycle repetitions से थोड़ा effect थोड़ा सा यूं कर सकते हो. I personally found it something, I wanted to do something like this. Okay, so I kept it like this and I animated it from that value till 0. Till 0 I animated it. Okay, and at the same time I animated the blend with original also. Okay, blend with original is just simply the opacity of the effect, as simple as that. All right, like initially blend with the original is 0, so like the effect won't blend with the original photo. As I move forward, as I progress forward, the blend with the original increases to 100%, which means the colorama effect is now blending fully with the photo that it's being used on. All right, so it starts from 0 till 100. That's how this colorama effect was done. Okay, this is just a very basic effect of colorama, one basic property of colorama. In this project itself, I'll show you another property, how to use depth map also. So just hang tight. This colorama effect was copy pasted on all these photographs. As you can see, these all photographs had colorama on them. Same keyframe length, same timing, same everything. All right. Next up is the movement. How I made the movement. Okay. For example, let's just pay attention to this one. Or maybe, this one. Okay. Let's just pay attention to this one. I'll just zoom in a bit here for you guys. Okay. I'll do you. Okay. Okay, so we have, these are the colorama keyframes. Okay, I think I might have some expressions also here. 1 second. Okay, not on the image. I think I have it on the, yes, perfect. So remember I told you that I used some shape layers as masks for each of these pictures. All right. Now I attached those images with that shape layer itself. Okay. I parented the image to its own respective shape layer and I animated the shape layer's movement. All right. So this is what the movement is basically. If you see, I have animated two things here: position, and scale. Two things are animated here. Scale is pretty simple. It's going from 0, almost negligible, like 0 to
100%, or whatever it is, like whatever the value you want to set. Okay, you can set 100 also. Okay, this is the scale animation, and this is, if you see after I just mark the position of like position keyframes, I've animated the position keyframe like this. First the image goes like this, then like this, in a straight path, not this, not like this. It goes this. It makes a 90-degree angle here. All right. How I did this? You just pay attention to these keyframes. Look at this graph. So this to this is very fast. It's extremely fast. Like almost like 1 or 2 frame difference. That's it. Cut. And it straight up goes towards the top. How you create this is basically, you can do one. I'll just teach you how to create this kind of keyframe. This is what you call row across time. Yes. The name is row across time. For example, I draw a shape layer here. Okay. And I just one keyframe like this, 2 frames later, keyframe like this, and 4, 5 or 6 keyframes later, like this. This is the motion. Okay. Now just ease it and take this keyframe and just row across time. Okay, that's how you get it. Row across time means it will just, it will take a stop at this particular keyframe. That's what it means. All right. Now you can just, on the graph, as you can see, if you just select this one, yeah, this is the graph. If you see, this is the row across keyframe wala keyframe. All right. You can just thoda sa you can put like this. Isko up, if you want to be here, you can just adjust the graph a bit. All right, something like this. Maybe. But you get the idea, right? Something like this. Okay, you see what's happening here. Cut. See what's happening. This is how I did it. All right, I think it should be clear by now. And one more thing that I did was use posterized time. Okay, I'll show you. Yes, on the position keyframe, I pressed Alt and I used this expression. Posterized time 12, value at time. This was the effect. Okay. Posterized time works similarly to, I think you might have heard about this effect, posterized time also. ईमान गाजी effect वगैरह में वो भांग भोसड़े के time बहुत use होता था ये posterized time. So it's that only, but as an expression. Okay. Why expression other than the effect? Because what expression does is it just simply applies posterized time on that property. Okay. पूरे layer पे नहीं लगाएगा वो. ठीक है. उस प्रॉपर्टी पे लगेगा, and at the same time I feel using it as an expression gives you much more control, okay, rather than using it on directly as a what do you call, from effect panel से. अगर तुम effect panel से posterized time लेते हो, उससे ज़्यादा control यहाँ पे मिलेगा तुम्हें. So I advise start using expressions. Okay, so I have posterized time here. Because of posterized time ये motion ऐसा लग रहा है. अगर मैं posterized time हटा दूँ, for example, fucking hell, ये अब जैसे अगर तुम 2 slashes, अगर if you put 2 slashes like this in front of an expression, it becomes a comment. Okay, I don't know who all are here from engineering background. I know some coding, so I understand this. This is JavaScript. Okay, this is JavaScript coding. So in JavaScript syntax, if you use double slash, it means a comment, which means that expression is redundant. It's just it's not usable. Okay, ये use नहीं होगा. It's just a text, as simple as that. ठीक है, जैसे ही मैं इस पे डबल वो हटा दूंगा, स्लैशेस हटा दूंगा, it will be taken up as an expression. Alright. So अभी मैंने क्या करा? अभी मैंने posterize हटा दिया है. See what's happening. It just acts very simply. See, this one. Just have a look at this one. I'll just solo this out. Okay. Yeah. See. I think मैं scale पे भी करा है क्या? No, scale पे नहीं है, बस उस पे ही है, position पे ही करा हुआ मैंने. ठीक है. So भी किया, and this is
coming very smooth without the posterize time. Now if I enable posterize time, okay, now see, huge difference, right? Now posterize time is applied. And this is what I did with all the images that you see. I'll remove this. Up, what is the difference here? This one is coming from this path. It has this path. This one, for example, there's the shape layer of this one. Yeah. This one has a different path. This has a different path. This one has a different path. Similarly, I have given each picture a different path. Why I have done that is because to break that simple flow, to break that pattern that, okay, everything is coming like this, everything is coming like this, like this, like this, like this. No, to break, sometimes you have to create that break intentionally. Sometimes it makes your motion look much more dynamic, much more interesting, much more random, and sometimes randomness is good for your motion. Okay, so that's what I did here. Okay, I just gave each and every picture a random motion in the similar path. Okay, every picture has the same path. Okay, for example, this one also, if you see, this one also has the same path, that 90-degree path, but the starting direction is different. It goes like this to this, very minor, but I've done this for every picture here. Okay, so colorama and that scale and position thing with posterize time is happening here for the grid. At the same time, this image grid, if I am not wrong, is connected to a null. What this null is doing is, this null is moving the grid, okay, from left to right. See, this null, it's moving the whole grid from left to right. Okay, and at the same time, I made sure that these last 1, 2, 3, 4, 5 pictures, I scale them up gradually so that the grid looks something like this. All right. First, initially, all of their sizes are same. Okay. Then after some time, I make sure that they increase progressively so that it looks like the grid is expanding a bit. Okay. Note down this scale up option, the scale up thing animation. I did it on each of the separate layer, not using a null. Okay. I did this, the null moved here. Then I attached another null. What this null did was, this null just gave this whole grid another motion from right to left. Okay. This. Do you see? Do you just notice what's happening? This slight motion. Okay. This is what this null did. Okay. You can see the graph here. And if you notice, there are some other minor details also. Look at these shapes. These are nothing but very, very small shape layers that you see. And they are just offset, as simple as that. These are shape layers. Okay, nothing's happening here. These are just random shape layers. I just added them. It looks like a glitch is happening or something like that. It's very small, tiny boxes, as simple as that. Nothing more. Let's move ahead. So what's happening is, when I use this grid to shift this whole grid a bit towards this side, okay, like this, what I did was, I took these 4 photographs and I gave them this motion. What's happening is, it's like they are coming up. They are like, one is moving up, one is moving down, one is moving up, one is moving down, and they are joining at the center. Tuck. See, it's very minor, but it's like they're merging at the center. That's what I did. At the same time, I reversed the colorama effect on these 4 photographs. Okay, so that I get this blue transition also, because our next frame is blue background, simple blue background, gradient background.
So 2 things I did. I merged these 4 pictures together, and at the same time I reanimated their colorama effects so that it looks like they're merging into the blue background. They're merging together at one spot into a blue background. Simple. Done. And that's where I get this text animation. Simple text animation, nothing else. Scene over. We move to the next scene. What's happening here is, let me show. We have a shape layer. This is the blue color shape layer. These are 2 shapes drawn using pen tool or taken straight from Figma also. I don't remember what I did, but I think I took them straight up from Figma. This was the color that was decided in Figma already. This is the shape layer, and this is another shape layer here. All right. What I've done is I've given them a Gaussian blur. Okay. See, this is without the Gaussian blur. This is with the Gaussian blur. Similarly for this also, without Gaussian blur, with Gaussian blur. Okay. To blend them in the background. And at the same time, I gave them a turbulent displacement to have that minor, very subtle animation. Okay. Both of them have turbulent displacement. Sauce bhul gaya. All right. Very basic text animation. This is a word by word text animation, and each word is sliding down, as you can see, sliding down and left, down and left. Each word is sliding down and left, and at the same time, each word starts with a yellow block of flash. Each word does that. Okay, if you can see. Cut. That's what happened. And these 4 squares, obviously very basic animation, very basic position animation and scale animation, nothing else. Nothing very exciting about this frame. Done. Now I had to remove this text. I could have faded it out. I could have just cut it. I could have done anything. But what I did was, I wanted to create a glitch. So what I did was, I used one shape layer. That shape layer covers the whole text. Okay. It covers the whole text. It appears for 3-4 frames, 1 or 2 frames, not even that. 2-3 frames. And the moment it disappears, I cut the text. I cut the words. Okay. These were the word layers. Okay. As you can see. When there is that glitch that I have drawn, okay, that glitch was intended to remove the text behind it. All right. I just cut the text. Simple. Cut it, and it's like a flash that's happening. Okay. Pani pee lu. ब्रो पोस्टराइज टाइम के बाद वैल्यू एट टाइम का वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? आई एम नॉट इवन श्योर. मैंने खुद सर्च किया था. आई डोंट रिमेंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट. जस्ट ट्राई सर्चिंग गूगल. ठीक है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. इट्स पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. इट हैज टू बी इंक्लूडेड. लेट मी बी वेरी क्लियर. सो बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर उसका मतलब क्या है. बट या दैट हैज टू बी देयर. उसके बिना ना काम नहीं करता एक्सप्रेशन. ये मैंने करके देखा हुआ है. ओ भाई चैट बहुत मिस हो गई. Goat here. There's nothing compared to the last stream, of course. अभी मैं बहुत इंग्लिश में ज्ञान चोद रहा हूँ भाई. ये तो कुछ भी नहीं है. पिछली स्ट्रीम में आते पता चल जाता भाई. पहले वीडियो तो प्ले कर दो. वीडियो जाके देखो ना, ट्विटर पे है पूरी अपलोडेड. हिब्रू स्पोकन जूज एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस. यस. ग्रिड इफेक्ट बता दो. ग्रिड इफेक्ट आगे आएगा, बताता हूँ. JS है ना ये. यस, जावास्क्रिप्ट है भाई हमारा कोडर है भाई. मजा आ रहा. BCA वाला हूँ. आई नो लिटिल बिट आल्सो पाइथन. नाइस. मेमोजी कैसे एनिमेट करते हो? मेमोजी एनिमेट कहाँ करा है भाई मैंने यहाँ पे? ब्रो पोस्टराइज टाइम के बाद वैल्यू, हाँ ये मैं बता चुका हूँ भाई. लॉक इन है. डैम. यस सर, आज लॉक्ड इन हूँ भाई.
भाई ये जो आपने स्लाइड करते हो सारे फोटोज को शो करा है, ये लास्ट में एनिमेट करते हो? लास्ट में एनिमेट मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. टाइम स्टैम्प इज मस्ट फॉर दिस वन ब्रदर. इस टाइम फंक्शन वो टाइम फ्रेम में क्या करना है उसका वैल्यू डालना है. अच्छा, ऑफ कोर्स. यस, डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है. पोस्टराइज आफ्टर इफेक्ट्स का नेटिव फंक्शन है, एक्सप्रेशन है. Well, we are encountering the knowledge that we get in $500 course, by the way. Exactly. ये चुतियापा तुम्हें $500 उससे भी ज़्यादा महंगे कोर्सेज में मिलेगा ये. मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ. Stop using plastic bottle bench. अरे यार माँ चुदा है तुम्हारा नेचर फ्रेंड. Yet this is insane भाई. ऐसा ज्ञान लौड़ा मिलेगा किसी कोर्स में. और क्या? That's what I was saying in my last stream also. You won't get this shit for free. Sorry. हाँ मतलब हाँ फ्री में नहीं मिलेगा तुम्हें ये ज्ञान. लॉग्ड इन कंटिन्यू करो. मैक कॉन्फिग क्या? M3 अल्ट्रा. एडिक्शन चैट पढ़ने का एडिक्शन बाबू भैया. Hey Vidhu, I've been working as a 3 months and finally landed my first use client for a launch video. Now I'm handling 2 projects. How do you manage burnout while losing? तुम्हारे 2 प्रोजेक्ट में ही बर्नआउट आ गया बहनचोद. 2 प्रोजेक्ट में बर्नआउट. हमारा भी एडिट देख लो. हाँ अभी इसकी अभी ब्रांडिंग अभी प्रमोशन शुरू होने वाला है. बस अभी आने वाला है कि भाई लिंक भेज रहा हूँ डीएम में, एक बारी देखो ना कैसा है एंड रेट इट आउट ऑफ 10. डब्ल्यू स्ट्रीम पैंचो लेट हो गया, वापसी रील देखनी होगी. प्लीज डिलीट मत करना. ना कोई भी लाइव स्ट्रीम डिलीट नहीं होगी बॉयज, डोंट वरी अबाउट इट. धूल चटवा देंगे, धूल चटवा देंगे. ब्रो व्हाट इज योर एज? नहीं बताऊंगा. एनीवेज बॉयज, गाइस वो सुपर चैट कौन दिया? कोई सुपर चैट दिया भी आज? कोई नहीं दिया यार. पाँच पिछली बार ही था भाई सुपर चैट वाले बेंच पगला गए थे लोग. आज तो कोई नहीं दिया. चलो बॉयज लेट्स लॉक इन अगेन. खत्म करते हैं फटाफट बॉयज. लेट्स गो. सो this happens, then according to the storyboard this search bar pops up. Okay, simple down to up animation. Okay, you have the text, what's in this product. This text animation, very basic text animation. What I have done is I have used this animator property, text animator 1, and I have animated the offset. Okay, and in advanced I changed it to words, not characters, words. And smoothness मैंने 0 कर दी. नहीं तो smoothness वो कर देते हो ना आप थोड़ी सी. if you just थोड़ा सा if you increase it also, you will see this fading in kind of thing. See, you'll see this happening. I didn't want it to happen like this. I wanted like word by word appear करे, so I kept the smoothness at 0. And that's how you did this animation, very basic animation. And at the same time I timed this arrow box aisa left to right animation, simple. And again as you can see I have these glitch boxes. These are nothing but very simple shape layers. kahan hai ye raha. These are the shape layers. These are very simple shape layers. I just offsetted them and their whole duration is also 2 frames, nothing more. Okay, done. I got this question bar. Then to change the scene, and not exactly the scene also, to change to change the context of what's happening, or like we are talking about something. Because in the script what was happening was, here it was saying every single day. So what I wanted to do was I wanted to create this effect like every single day. ऐसा तीनों पे मेरे को emphasis डालना था. So what I did was, every pay you have this question, then single pay there's a slight zoom into the frame, there's a slight zoom in, and more question boxes pop up. And then when she says day, we zoom in even more and we pop even more question bars. Alright, इससे क्या होता है? I was creating that tension, okay, that that emotion कि भाई every single day, वही questions रोज के रोज हर बार. That was the context of the script कि भाई हर रोज वही चीज बार बार. तो इसलिए क्या हो रहा है, every पे एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन आता है,
फिर उसके बाद सिंगल डे, फिर और क्वेश्चंस, फिर डे पे मोर क्वेश्चंस. सो आई वांट टू क्रिएट दैट इफेक्ट. टू सेल इट आई यूज्ड दिस काइंड ऑफ इफेक्ट जहां पे ऑन एवरी वर्ड इज लाइक zoom in, zoom in. That, you know, intensity, to create that intensity ki like every single day we are targeting those questions like on a daily basis. So sometimes in motion design also, when you're creating launch videos or anything, any type of edit you're creating, you have to use these tools, you have to use these hacks to generate some emotion, okay, through that piece or through that scene. All right, बहुत simple है. I did nothing. I just cut, zoom in, cut, zoom in, and I increased the question bars. That was all that was happening. As simple as that. Okay, done. Now we'll move on to a very powerful scene here. Zoom. Okay, so what happened here is, I'll tell you something. This scene was something that the client asked. Okay, initially before that, I think the scene was, wait, I'll show you the older version that I made. Okay. Okay, so the file is missing. Fuck. So, how should I tell you? मैंने कैसे किया वो चीज़? चलो, okay, let me just, let me open the window, this video. High employee turnover. Same questions every single day. हाँ. I'll tell you this effect now. What happened here? ठीक है? So this is simple. This is nothing but, again, here's this simple shape layers drawn over those question bars, and during the duration of those shape layers, these question bars were cut off, and just made it like glitch disappearance. As simple as that. Like cut. Okay, it was as simple as that. I used 2-3 colors here. I think I used 2 colors. It was this brand ka pink color and this blue color that I used here. Okay, to show that glitch. Now, client made it, like client changed it a bit, but the original effect was this. Okay, this was the original effect. Okay, what was happening was, क्या chat चल रही है? बना. Okay. So basically what happened was, this effect was created using 2 effects, colorama obviously, and depth map. Depth map is something that you won't get in After Effects. Okay, there are plugins, there are scripts. I am not using any plugin or script for depth map, but there are. Depth map क्या होता है? Basically what is happening is, what a depth map is basically, you see, this is the original image, okay, or a video, original video, okay. This was the original video. By the way, this was AI generated. Okay, we generated an AI image first, like it was an AI generated image. Then using Seedance 2.0, we animated this. Okay, we animated the image, and that's how I got this footage. What I did was, this is not basic colorama. This is colorama plus depth map. I'll tell you the workflow. You have this video, okay, you have this video with you. Go to Nano Banana. I use Nano Banana for this. Go to not Nano Banana. Either you can, yeah, so the workflow was, original image for this. I took this to Nano Banana. I gave Nano Banana a prompt to ask it to generate a depth map for this image. Okay, Nano Banana generated the depth map. Now, I opened Seedance 2.0 on Xfield, by the way. I uploaded the depth map image, black and white image होता है depth map. Depth map looks something like this only. Depth map kinda looks like this. Okay. I uploaded the depth map video, image, and I uploaded the original AI video that I got. Okay, this video. I asked Seedance to animate the depth map wala video and copy the motion from this video. Okay, this video was given as a reference कि भाई ऐसा animate करना, ऐसा camera angle रखना, everything should be same. ठीक है? इस video का starting frame was generated as a depth map.
ओके उस डेप्थ मैप को सीडांस में दिया और सीडांस को ये बोल दिया कि भाई इस डेप्थ मैप को एनिमेट करना है इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीडांस ने 99% एक्यूरेट रिजल्ट दिया और वो रिजल्ट था ये वीडियो, द वीडियो दैट इज सी हियर, दिस वाज द डेप्थ मैप वीडियो, ठीक है। व्हाट डेप्थ मैप इज? डेप्थ मैप कुछ नहीं होता। डेप्थ मैप कोई भी इमेज होती है, ठीक, कोई भी इमेज होती है, कोई भी वीडियो होती है, उसको एक ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक टू वाइट के स्केल में ऐसा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां पे तुम देखो डार्केस्ट मीन्स सबसे दूर, सबसे पीछे, जेड एक्सिस पे सबसे पीछे 3D स्पेस में, एंड जितना ब्राइट होगा उसका मतलब वो उतना ही कैमरा के सामने, कैमरा के पास है, ठीक है। डार्क मीन्स फार अवे फ्रॉम द कैमरा, white means closer to the camera. That's how a depth map is. That's all you have to know about depth map. अब कलोरामा क्या करता है ना, कलोरामा को अगर आप मैं तुम्हें नई चीज बताता हूं, ठीक है। I'll just name it as colorama. So what you do is, for example, you create this solid और इस solid पे you give a gradient ramp, sorry, ठीक है। Right now the values are black to white is down here, black is up here, ठीक है। अब इसके ऊपर if you apply a colorama, ठीक है, what is happening is अभी ये दिख रहा है, ठीक है। So colorama also, if I remove the gradient ramp, is just a simple red color, ठीक है, कुछ खास ऐसे दिख नहीं है, कोई कलोरामा का मेन इफेक्ट नहीं आया इस पे। बट नोटिस व्हेन आई टर्न ऑन द ग्रेडियंट रैम्प, द कलोरामा शोज अप। व्हाई? बिकॉज कलोरामा यूजेस ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज टू मैप इटसेल्फ, ठीक है, सिंपल, समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, इनिशियली क्या था, ब्लैक यहां था, व्हाइट यहां था, ब्लैक को मैंने यहां कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, एंड व्हाइट को इफ आई जस्ट शिफ्ट इट हियर, एज सिंपल एज दैट। नाउ इफ आई टर्न ऑन कलोरामा, सी it's changed. This was initially here. So what I'm doing is, अब मैं gradient ramp के अगर मैं इन anchor points को थोड़ा change करूंगा ना, see what is happening here. See, you understand what is happening? Like I said, colorama operates on black and white values. Simple. कलोरामा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, कलोरामा को ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। अब अगर तुम कैसा भी ग्रेडियंट बना दो, फॉर एग्जांपल इस ग्रेडियंट रैप पे तुम फ्रैक्टल नॉइज लगा दो, ठीक है, करके तुम बहुत भांग घोषणा कर दो इसके ऊपर, ऐसा कर दो, देन यू अप्लाई कलोरामा, नोटिस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट चेंज द ग्रेडियंट रैम्प का डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। अभी कुछ नहीं होगा बिकॉज इसके ऊपर फ्रैक्टल नॉइज लग गया। फ्रैक्टल नॉइज से यू कैन ट्वीक दिस, can convert this to a block, ठीक है, create something like this. So you understand what is happening. I'll say it once more, last time. Colorama works on black and white values. Simple, ठीक है. Now following that concept, we'll come back here. We have the black and white values of the video that we want to apply colorama on. We applied the colorama effect on the original video. Why? Not on this one. Not on this one. We applied it on the main AI generated footage. क्यों? हमने क्या किया, उसको हमने साथ में ग्रेडियंट वाइप भी दे दिया। ग्रेडियंट वाइप क्या करता है? ग्रेडियंट वाइप कोई भी लेयर है उसका ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन है वो लेके ट्रांजिशन क्रिएट करता है, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक इफ आई हैव अ ग्रेडियंट, लेट्स से लेट्स रिमूव द कलरामा हियर फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्रैक्टल भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसका ग्रेडियंट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। नाउ इफ आई हैव अनदर सॉलिड, उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, एंड आई अप्लाई ग्रेडियंट रैम्प टू इट,
सॉरी ग्रेडियंट वाइप, ठीक है. If you change the source from effects in if you change the source from like black solid के ऊपर हमने gradient बना रखा है, ठीक है. हमने source we selected this layer जिसके ऊपर gradient है and we use effects and mask, ठीक है. Now if we do it, this layer जिसके ऊपर gradient wipe लगा हुआ है, it follows that wipe transition according to the gradient applied on this, ठीक है. So gradient wipe according to black and white values, as simple as that. That is what you call gradient wipe. Gradient wipe बस वही होता और कुछ नहीं होता, ठीक है. हमने क्या किया था, जो ओरिजिनल लेयर थी, ओरिजिनल AI वीडियो थी, उसके ऊपर हमने ग्रेडियंट रैंप लगा दिया था, सॉरी ग्रेडियंट वाइप लगाया था. और उसका सोर्स हमने कर दिया था लेयर 184 विच इज द डेप्थ मैप की वैल्यूज यूज करके इट वाज यूजिंग ग्रेडियंट वाइप, ठीक है. डेप्थ मैप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, उस ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यूज को यूज करके वो एक ग्रेडियंट वाइप क्रिएट कर रहा था. सिंपल, बस खत्म बात, ठीक है. और एट द सेम टाइम कलोरामा ऑपरेट कर रहा था ग्रेडियंट वाइप के अकॉर्डिंग. सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो यू सी, इफ यू नोटिस पीछे थोड़ा अलग कलोरामा की वजह से अलग कुछ इफेक्ट आ रहा है, आगे बिल्कुल अलग इफेक्ट है. वाई? बिकॉज द कलोरामा इज फॉलोइंग द डेप्थ मैप के अकॉर्डिंग कलोरामा चल रहा है. जो डेप्थ मैप का जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, इट इज being controlled using the depth map की black and white values पे डिपेंड हो रहा है ये. उसका हमने blend करा है from 0 to 100, मतलब जो blend with original मैंने starting में बताया था, that's what's happening here. Okay, this is what's happening and ये blend हो रहा है. The colorama is blending with the original video and we get this transition. Simple. And if you see, it's starting from like पीछे से आगे आ रहा है वो, from black to white. If you see, black to white, that's what's happening here in this video at the same time. It starts from the darkest values and it comes, सबसे लास्ट में आता है white values की तरफ. ये see here, this texture is being followed. Okay, colorama, this is how you tweak colorama. ये effects तुम copy कर सकते हो, you can copy it from here. Okay, brightness, hue and saturation, brightness, contrast, noise, these were some values that were given on extra, you like over the top, not mandatory, but you can do it, up to you. Done. This effect is done. This was just very simple, what do you call, one second, these were just very simple UI boxes. Okay, they were animated independently, they were taken from Figma and animated. No, not very complicated about, nothing very complicated about it. Basic text animation, a match cut, a zoom in match cut. We again have this text animation that I used earlier, this sliding kind of text animation. It comes, we have these WhatsApp messages popping up. Very simple effect, nothing. इनका anchor point, I set the anchor point here. कुछ का center पे, I think इसका center पे. हाँ, this anchor point I set here and I give it a scale animation with bounce. थोड़ा WhatsApp chat वाला animation वाला feel आना चाहिए. Okay, and basic text animation done. This is again very simple. These are random shape boxes. Their position have been animated very randomly और इनके keyframes को हमने वो कर दिया है, toggle keyframe hold किया. Toggle keyframe hold, I hope you guys know what is that. Okay, basically if you draw a shape and let's say we animate the position first here, then
थोड़ा सा बाद में here, and थोड़ा सा बाद में here, then a little later here. Okay. Now, if we normally keep it, it goes like this. Okay. But if we use toggle hold keyframe, all of them are like endpoints. Okay. Now they act individually. You understand? This is what toggle hold keyframe does, and it applies on every property. So it's not like it's only for position property. It सब पे applicable है ये. And this has been done for all the shape layers that you see here. Okay, cut. And I have animated it in a way that it uncovers the word mark logo here. First, it covers the U, this shape, this blue shape. It cuts and the U is revealed. Then this shape, it cuts S. Then this one, it cuts, it reveals the K. At the same time, J के ऊपर का जो dot है, it comes down and it bounces on the J and it gives us this bouncing animation. Very easy. Position plus bouncer use करो, ये बन जाता है. Very simple. Just apply a gradient animation over it. Okay, just wipe the gradient over it. As simple as that. Done. This scene is over. I think we have covered 11 seconds of the video. Nice. This one was the most like, oh bhai sahab, gaan pat gayi thi meri. But anyways, break time. Chat miss ho gayi, boys. Master Chief bro is 25. पहले SaaS बनाया है भाई, पहला SaaS बनाया है भाई with the Figma workflow. किसने? मैंने. नूनू टॉक्स ब्रेक हुआ है गाइस. कुछ पूछो चलो ना, आगे करवाओ भाई. सुपर चैट हो नहीं रही है आज, बंद रखी है क्या? नहीं ब्रो, सुपर चैट तो चालू है. आई डोंट नो, कोई दे नहीं रहा है आज. सैड, आज कोई करना नहीं चाह रहा है सुपर चैट. नूनू टचिंग स्क्रीन. कोई हिला ना रहा हो भाई पीछे बैठ. कोई भोसड़ी वाले से आराम ही लौंडे हैं भाई. W's in the shot. चलो बैठ के देखता हूँ. एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बाद में देखता हूँ. देखो कोई दिक्कत नहीं भाई. W हाई ब्रो. शुक्र कर काम मिल रहा है. बर्नआउट दा पुत्र ना होए थे. हाँ करेक्ट भाई, कम से कम काम तो मिल रहा है ना भाई. यू शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट. ठीक है, कल को काम नहीं मिलेगा ना, फिर इसी तरसोगे फिर. Is SaaS dead, or do you think there's still small space or small does to grow? And if so, what's the best style you can grow for? I don't know. SaaS में कोई style भी है क्या? I'm not sure. Just go for neat and clean motion graphics. Okay. Of course, you need to practice a lot. In SaaS, there are a lot of players that have popped up. पहले भी थे और अभी भी हैं. So just practice. I'm afraid of AI taking over our job in a few years. Any tips how to come? You don't have to worry about it. AI नहीं करेगा replace, and we are the ones who will be controlling AI. So don't worry about it. इतना कुछ नहीं होने वाला है. What is the next style after SaaS? I don't know, and trust me, no one knows. I genuinely can't anticipate what is happening. Like what will happen after SaaS. Live stream का नाम रखो. Never ever start motion design without watching this video. Yes. Correct. All the sites are available to generate. हाँ, there are sites. Will provide Discord. अच्छा, बहुत बढ़िया. Plugin भाई हाँ फ्री में प्रोवाइड करवा दो भाई. है तो डेप्थ मैप का मुझे भी चाहिए. इनफैक्ट हिंदी में ही बोली. पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो. यस सर कर देंगे. In which year of college did you start video editing? I started editing in second year of college. हाँ, first year end हुआ था I think. हाँ, that's where I started. How long did it take you to learn? It took me a lot of time, obviously. 1-2 years, so like
आई मीन इट्स योर ओन पेसिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को बहुत कम टाइम लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इट्स टोटली अप टू यू. इट लुक्स लाइक एन एक्सरे. हाँ, डेप्थ मैप लुक्स लाइक एन एक्सरे ओनली. प्लीज टीच इन डाविंची 2. भाई डाविंची में मोशन डिजाइन कर रहा है कोई क्या? W all clear. In which year of college? Depth map given 3D special to 2D data. Correct. So much information. Exactly. भाई तो काफी थक गए. Take a break. विदु का नुनू का डेप्थ मैप बनाओ. AVTV वाले तो मास्टर क्लास के नाम पे कोर्स ही बेचते रहते हैं और भाई प्रॉपर मटेरियल फ्री में शेयर कर रहा है. और क्या भाई ये चुतियापे हैं, ये सब चुतियापे हैं भाई. मत पढ़ो इनके चक्करों में, मत पढ़ो. ट्रस्ट मी. आई एम नॉट इवन एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ हियर. मैं अपने ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा देखो आगे उनकी माँ चुताओ, नहीं. आई एम जस्ट सेइंग भाई वो सब बहुत चुतियापे हैं. अगर तुम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो ना कि भाई प्लीज़ करा दो यार कहीं से माँ चुत, हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि मैं जो तुम यूट्यूब पे आके सर्च कर ले. अगर तुम में इतना भी दिमाग नहीं है ना तो भाई तुम जाओ और लो. फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ. तुम्हें पता ही नहीं है इसका मतलब कि काम करा कैसे जाता है. कुछ सीखना हो तो सीखा कैसे, क्योंकि आज ये इफेक्ट चल रहा है, कल को दूसरा इफेक्ट आ जाएगा. उसके लिए कोर्स खरीदोगे क्या? एक पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हें खुद भी चीजें सर्च करके ढूंढ के करनी पड़ेंगी. सब कुछ कोर्सेज से नहीं होता है. चूतिया मत बनो. एवी की तो बात ही नहीं निराली है. और क्या. डन ऑलराइट ब्रो. वेयर डू यू गेट द आइडिया अबाउट हाउ टू चूज द ग्रेडियंट? I mean, we had one single brand color, or we thought that we need some gradients here. So we generated multiple colors that will go with that brand color. हमने coolers use किया था. coolers एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है. It generates a palette. वो करा था यूज. उससे हमने 2-3 कलर्स निकाले और उन सबका ग्रेडियंट बना दिया. As simple as that. Is $1,000 salary good for motion design? Beginner, हाँ मतलब ठीक है. सैलरी पर मंथ, हाँ मतलब ठीक है, कर सकते हैं. No bro, minimum $10,000. Bro, not at that level yet for 10,000. Yes. Any course recommendation to reach your level of editing? No course, no. भाग जाओ यहाँ से. कोर्स करना है तो भाग जाओ यहाँ से. कट करके पोजीशन चेंज करने का सीधा तरीका. यप. ओ फिर चैट हो गई. ओ भैंचोद. गर्दन दुख गई. Was the last stream, bro? He will teach you which course law. Whoever wants to know what are the best courses in the market right now, please go watch my last live stream. You will know what course to watch. In fact, अभिषेक भाई अगर तुमने timestamps अगर मार्क करें पिछली लाइव स्ट्रीम में तो प्लीज फॉलो दोस timestamps as well. वहां पे तुम्हें एक मिल जाएगा कि भाई कोर्सेज के बारे में मैंने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज बताए हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज बताए हैं. वहां जाओ और उन कोर्सेज को देखो, सुनो उन कोर्सेज के नाम सुनो और प्रोसेस करो अपने आप को. फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगी कौन सा कोर्सेज करने, कौन से कोर्सेज नहीं करने, कैसे बनते हैं मोशन डिजाइनर. He recommends only YouTube and just no brother. He launched Rocket using YouTube and books. Really? भाई कोर्स की बात इधर मत करो. भाई गाली दे देगा बहुत जोर की. देखा अपने खौफ. देखा विद बॉय कल्ट में यही दिक्कत है. दिक्कत नहीं, अच्छी बात है. कोर्सेज के नाम पे खौफ जाते हैं, ऐसे डर, ऐसे सहम से जाते हैं लोग कि भाई बहनचो कोर्स ना बोल दे तो गांडी मार लेगा, गांड में ऐसे हाथ ही दे देगा अंदर तक बहनचो. तो ध्यान से कोर्सेज के बारे में थोड़ा ध्यान से मेरे साथ. Tony Stark made this in a cave. Exactly. और वो बंदा क्या बोलता है? I am not Tony Stark. Exactly. एक ही टोनी स्टार्क एक ही है भाई. टोनी स्टार्क ने भी खुद से ही बना के करा. ठीक है, वो भी गया नहीं था गूगल पे कोर्सेज टू मेक आयरन मैन सूट. चुतियापा. With boy, do you sell project files or something, or is that against the client's contract? No, I sell project files. That's not a problem. ओ बहन चो फोन चार्ज कर लूँ 1 मिनट, कैमरा बंद हो जाएगा. एक मिनट दो बॉयज, 1 मिनट कैमरा बंद कर रहा हूँ यार मित्रों.
थोड़ा एंगल फिक्स कर दूं, फ़ोन को लगा दिया चार्ज पे, ऑल गुड। यस, हाँ तो कहाँ थे भाई हम? हाँ मैं बेचता हूँ, आई सेल प्रोजेक्ट फाइल्स इन कमरोड। लेट्स गो माय मैन। भाई पर्सनल ब्रांड के लिए चालू करे, ये लाइट, ये कैमरा, ये थोपड़ा पर्सनल ब्रांड के लिए तो है, अभी पर्सनल ब्रांड चालू हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। इज देयर एनी एज टू गेट इनटू दिस स्टफ? यस यस, 25 के बाद ही एज करना, घुसना है इसमें, उससे पहले मत घुसना इन सब चीजों में। वेयर आर यू दीज डेज? एट माई होम ब्रो, cooking up some motion videos, some SaaS for some companies. Hi bro, I'm from Bangladesh. की हाल है भाई? With boy, how much RAM really need for your kind of After Effects editing भैया? यार 16 GB से तो ऊपर ही चाहिए आराम से. What the fuck are these questions man? Come on. Exactly. That's what my reaction is also. भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? So यहाँ फ्री में ज्ञान चौदह तो मैं तो रैम पूछ रहा हूँ यहाँ पे. अबे यार स्पैम मत करो. Why don't you make a course for us? March हट course. एडिट रिव्यू करो व्यूअर्स के नेक्स्ट स्ट्रीम पे. यस, एडिट रिव्यू के लिए स्ट्रीम करेंगे भाई एक डेफिनेटली, और उसका एक वीडियो बना देंगे, कोई सीन नहीं है. डन है, डन. एडिट रिव्यू पक्का. उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, सबमिशंस वगैरह आएंगी, वो देखनी पड़ेगी कितनी अच्छी क्या है, फिर उनके बेसिस पे एडिट रिव्यू चलेगा. जितनी भी रैम डालो कम पड़ती, मेरी 64 GB है, स्टिल आफ्टर इफेक्ट्स लैग्स इन इवन. हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स का यही सीन है, जितनी भी रैम डालो, हाउएवर लाइक irrespective of the amount of the RAM that you have, After Effects will lag. Okay. भाई दिमाग अगर क्रिएटिव नहीं हो तो कोई कोर्स नहीं सिखा सकता. एग्जैक्टली. क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टॉट. इट्स इनबिल्ट, यू आर बॉर्न विद इट. ओके, कोई आपको वो नहीं कर सकता है, मतलब कोई सिखा नहीं सकता है क्रिएटिविटी. फिर चैट खो गई भाई. ये कोर्स रिकमेंडेशन वाले काफी आ गए हैं, रिचुअल एक बार रिपीट कर दो. भाई लेकिन यार बहुत भारी हो गया था भाई, बहुत भारी भारी गालियां बकी थी भाई उस दिन, पर जरूरी भी था भाई. ये कोर्सेज वालों ने परेशान कर दिया था मेरे को, और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस थे कोर्सेज को लेके, वो तो दे हैड टू कम आउट समहाउ, यू नो. हेलो ब्रो, आई एम फ्रॉम उज्बेकिस्तान. क्या बात है. हाय, हेलो. हाय ब्रो, फ्रॉम बांग्लादेश. स्पीक्स पंजाबी इमीडिएटली. माय बैड. आई डिडंट रियलाइज दैट. हाँ, वो बेचारा बोला बांग्लादेश से, वो मैं पंजाबी में शुरू हो गया था. हाय ब्रो, लव फ्रॉम इंडिया. भाई कितना डिले है यार, आई डोंट नो, थोड़ा डिले तो है आई थिंक. बेटा जल्दी सो जा वरना वेदू आ जाएगा और कोर्सेज की बात करेगा. एग्जैक्टली भाई. बच्चों की माँ उनको यही बोलती है कि कोर्सेज के बारे में बात मत करो, नहीं तो विद बॉय आ जाएगा गांड में कनस्तर देने. ब्रो यू हैव रीच 5K पर मंथ थ्रू फ्रीलांसिंग. मैं नहीं बताऊंगा. न्यू व्यूअर्स के लिए लाइव लास्ट स्ट्रीम रिचुअल की तरह है, जो करना आना मस्त है. हाँ भाई मस्त है. नए व्यूअर्स के लिए वो बहुत जरूरी है भाई, वो एक रैंट देना ही पड़ेगा हर लाइव स्ट्रीम में भाई, क्योंकि जनता नहीं मानती भाई, जनता को चाहिए कोर्स. कोर्सेज का रिप्लाई है विद बॉय के एक्सपोस्ट में मिलेगा. किसी ना किसी सोशल मीडिया पे मिल जाएगा भाई जवाब. भाई की फ्रेम पे एक चीज पूछनी थी, ज्यादा से ज्यादा कितने फ्रेम के गैप रखना चाहिए और ट्रांजिशन पे कितना डिफरेंस होता है. भाई डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर मेकिंग. ठीक है, ज्यादा स्लो एनिमेशन रखना तो 1 सेकंड 1.5 सेकंड तक कर सकते हो. एंड इफ यू वांट द ट्रांजिशन टू बी वेरी क्विक और द एनिमेशन टू बी वेरी क्विक, द की फ्रेम शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ऐसा कोई देयर आर नो वैल्यूज. ओके. हो सुपर चैट आया भाई आज. 40 रुपीज फ्रॉम अंश. ठंड रख, डाइट कोक पी लो पैन चोद. थैंक यू सो मच अंश. W's in the chat for अंश बॉयज. लेट्स गो. डाइट कोक के पैसे भेजे हैं भाई ने.
I'll definitely get a light coke also. भाई बहन जो कितनी चीज़ें लानी है. I have to get a croissant. I have to get a fucking black. I have to get a coffee. अभिषेक ने इतने लाइव स्ट्रीम उतने वो सुपर चैट्स करे हुए हैं उस चीज़ के. डाइट कोक भी लानी है अभी अंश भाई के नाम पे. So thank you so much अंश once again. Peace. Thank you so much. भाई फिर चैट हो गई. What about Ben Marriott कोर्स? भाई Ben Marriott बहुत खतरनाक है भाई. मेरे को तो डर सा ही लगता है भाई उसकी स्ट्रीम. पता नहीं वो क्या ही पढ़ाएगा बेंचोद. फ्लो में क्या बोल रहे हो भाई? जस्ट कंट्रोल योर वर्ड. फ्लो में क्या बोल रहे हो? जस्ट कंट्रोल योर वर्ड. भाई इस स्ट्रीम पे जनता आती ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. गाली गलोच जो मुंह पे आता बक देते हैं भाई. एज सिंपल एज दैट. कोई बकवास कर रहा है तो उसकी भी गांड मार लेते हैं. रहना है तो रहो, नहीं रहना तो भग जाओ. नहीं तो अपना वो मीम तो है ही, आप यहां बैठ जाइए. सिंपल. देयर इज नो कंट्रोल ऑन दिस लाइव स्ट्रीम ब्रदर. इफ यू कांट टेक द हीट, गेट द फक आउट. एज सिंपल एज दैट. आई एम श्योर बहुत जो कंसिस्टेंट जनता उन्हें पता होगा ये बात. वो गाली खाती भी है और गाली देती भी है. और मैं भी गाली खाता भी हूं, मैं गाली देता भी हूं. So, take a chill pill. बेस्ट कोर्स रिकमेंडेशन बोल के वीडियो बना दो और लास्ट स्ट्रीम के लाइव स्क्रिप्ट डाल दो. ओ हाँ भाई, गुड आइडिया. ये अच्छा आइडिया भाई. एक कोर्स रिकमेंडेशन नाम का एक ना वीडियो टाइटल रख दो कोर्स रिकमेंडेशन के लिए. बेस्ट कोर्सेज टू डू फॉर मोशन डिजाइन. और वो लास्ट मेरी जो लाइव स्ट्रीम है ना उसके मॉन्टाज बनाऊंगा गालियों का. कट भैंचो माचो और जोड़ के कट वीडियो भाई. रेज बेट मैक्स. मजा आ जाएगा भाई. ये गुड आइडिया. वांग MP4 गुड आइडिया. लाइक रखो. ये आदमी कोर्स जरूर स्टार्ट करेगा अभी, नहीं तो कुछ साल बाद. चल तेरी मां की चूत. एक्स प्रीमियम जरूरी है क्या? सिंपल पे रीच ज्यादा नहीं आती है, ज्यादा लोग पहुंच नहीं पा रहे. एक्स प्रीमियम हाँ एक पॉइंट बाद चाहिए होता है. फील कर लो. 20 सेकेंड का डिले है. आई गॉट इट. हो सकता है. वांग MP4 गुड आइडिया. हाँ एग्जैक्टली मैन भाई. अच्छा आइडिया था वो. मैं करूंगा डेफिनेटली. ब्रो डिड यू एवर गेट स्कैम्ड? हाउ डिड यू अवॉइड गेटिंग स्कैम्ड? हाँ मैं स्कैम हुआ हूँ भाई. ऐसी बात नहीं है. काफी बार स्कैम हुआ. स्कैम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है 50-50 कर लो पेमेंट्स. और वाटरमार्क से बढ़िया चीज नहीं हो सकती स्पैम से बचना हो तो. स्कैम. अंश थोड़े और भेज भाई. यूट्यूब कट कर लेगा इसमें से. आई मीन टेक्निकली इज राइट बट कोई बात नहीं भाई. 50 का हो गया डाइट कोक. हाँ बे डाइट कोक भोड़ी का 50 का कर दिया. कैन 30 ml बढ़ा दिया और 50 की कर दी. वाह बेटे वाह भाई. हाउ मेनी अरे फॉर श्योर. कल्ट गैंग ओपी. यस सर. यार वेदु भाई आपकी वीडियो देखता हूँ फिर मैं कोशिश करता हूँ बट टाइमिंग एंड इजी हमेशा फंसती है. टिप्स दे दो यार. वही है भाई की फ्रम थोड़ा आगे पीछे करो थोड़ा सा. और उनकी स्मूथनेस थोड़ी करो. छेड़ो. बन जाएगा यार. यू विल फाइंड समथिंग. हमें भी किसी ने सिखाया नहीं है ये सब चीजें. प्रैक्टिस होती है सब आ जाता है. वो मर्दी क्या जो गाली ना दे. एग्जैक्टली वो मर्दी क्या जो गाली ना दे. मीठा थोड़ी ना हूं मैं. गौरव भाई विद 100 रुपीज सुपर चैट. लेट्स गो भाई. फाइनली सुपर चैट हो रही है अब. एंड 2 डाइट को मेरी तरफ से चीयर्स. मजा आ गया भाई. क्या बात है गौरव. थैंक यू सो मच. डब्ल्यू द चैट फॉर गौरव गाइस. प्लीज मैं बोल रहा हूं तो कर दो ना यार. डब्ल्यू दे दो ना. क्या हो गया. एंड चौधर भाई ने 100 रुपीज भेजा भाई. इसमें से यूट्यूब क्या ही काटेगा. प्लीज डब्ल्यू द चैट फॉर यू फॉर गौरव. लेट्स गो. थैंक यू सो मच. Bro, just a suggestion, put green screen behind you, zoom on yourself, I can't even see you. I agree. मतलब मैं बड़ा कर सकता हूँ ऐसे अपने आप को शक्ल थोपड़ा वगैरह बट ग्रीन स्क्रीन यार मेरे को इतने स्पेस में रखना नहीं है. बहुत अजीब सा हो जाएगा. दैट्स वाई. इतना स्पेस है नहीं आप ग्रीन स्क्रीन लायक. दैट्स वाई. www. Yes. Let's go. W's in the chat. Play with keyframes like she played with you. My man. Big W for Gaurav. Yes.
भाई कोई सुपर चैट कर रहा है यार, प्लीज प्लीज गिव देम अ डब्ल्यू प्लीज, थोड़ा एक ऑनरेबल मेंशन होना चाहिए भाई। ये लोग भाई, मैं क्या ही छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे को ये लोग भरोसा कर करके भाई सुपर चैट्स दे रहे हैं, तो प्लीज एटलीस्ट द लीस्ट आई कैन डू इज डब्ल्यूज फॉर देम, द चैट वॉइस। Anyways boys, let's break down this animation. ये ग्रिड वाला एनिमेशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद तो बस एनिमेशन लाइक ब्रेक डाउन खत्म है, इसके बाद तो सारा बेकार सा है, इजी सा है बिल्कुल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। Alright, so boys, chat, please थांबा, please come back, आ जाओ वापसी, इधर आ जाओ प्लीज, फोकस ऑन द ग्रिड एनिमेशन, सबसे ज्यादा डिमांडेड चीज है ये भाई। ब्रिंग अ रेड बुल और डाइट कोक फ्रिज, प्लान्ड है भाई, प्लान्ड है। डाइट को रेड बुल वाला फ्रिज में लाऊंगा, मेरे को रखना है पीछे, प्लान्ड है। थैंक यू फॉर द सजेशन। ऑलराइट बॉयज, वी आर एट द ग्रिड एनिमेशन। आई थिंक ग्रिड एनिमेशन सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड की थी, ग्रिड एनिमेशन कैसे बनाया, मुझे खुद नहीं याद पैंट चोद, पर आई विल तुम्हारे सामने फिर से दिखाता हूं कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था। मादर चोद। Does anyone know Vedant Bro PC Max M3 Ultra Mac? Yes. So, all right. So what I did was this grid animation. I knew that it will be very complicated to make. Okay, not even like not complicated, but I would say it will have a lot of layers, like lot of layers. By grid animation के लिए color change कर लेते हैं। थोड़ा दूसरा कलर ले आता है मैं ग्रिड एनिमेशन के लिए, पिंक ले आते हैं। वो इतनी ऑरेंज हो गया तो ग्रिड एनिमेशन के लिए पिंक, थोड़ा सा पिंक में आ जाते हैं बॉयज। चलो तेरी पेड़ दी। यस, तो फॉर द ग्रिड एनिमेशन व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ very different composition, okay, because I want to keep the main timeline a bit clean. Okay, so let's go and see what is happening inside here. As you can see, we have the voiceover clips that I wanted to use for this grid animation specifically. Okay, भाई कोठे वाली लाइट जला दो। मादर चोद, मैं जब भी RGB वाली लाइट ऑन करता हूँ कोई ना कोई आ ही जाता है, बोलता कोठे वाली लाइट ऑन कर दो। ठीक है, anyways, so first thing was step by step चलें। First thing was these are the AI videos, okay? So yeah, this video where a package is being given to the customer, okay? Then we have this video, ये आंटी जी खड़ी हैं स्टोर के आगे। Then we have this wine store वाला video. Then we have this customers, like salesman and customer talking to each other वाला video, ठीक है? We have these 4-5 videos here. Okay, these are the base behind it. Okay. Next up, we have. Okay, so what is happening here? Let me just check. These are the compositions. Okay, I used a script here, which was dynamic, right? So what I did was I'll just demonstrate. By the way, I bought this script for 7 euros. 7 euro का मैंने ये script खरीदा था, dynamic grid. It's a very good script. I used this script for this solely for this animation. तब भी still it took me 2 hours to finish this whole animation with the script. So without the script, I can't even imagine how much time would it would have taken without the script. 1 second. किसी ने बोला red for grid. और फिर रेड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सही है भाई। हाँ, सीरियस मोड है बॉयस,
सीरियस मोड है थोड़ा सा, तो रेड ले आए हम इस चीज़ के लिए, ठीक है. एनीवेज, तो विद द स्क्रिप्ट इट टुक मी 2 hours टू मेक द एनिमेशन. सो जस्ट इमेजिन विदाउट द स्क्रिप्ट मुझे कितना टाइम लगा होगा. ऑलराइट, लेट मी जस्ट डू इट फॉर 10 seconds, ठीक है. What I did was I used the script, okay, this grid builder script. As you can see, these are vertical divisions, horizontal divisions. These are the number of rows and columns, as simple as that, very self-explanatory. What strokes per cells. So the grid, जो grid बनेगा, ठीक है. मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता यार, ब्रश टूल मुझे यूज नहीं करना. अरे माच दा ब्रश टूल, हाँ. So basically what will happen is the grid that will be made, it will have strokes and at the same time it will have cells. Like for example, each division will have its own cell. Okay, why I have kept it at this setting, I'll tell you later. Okay, you can keep only cells also, where only cells will appear. You can keep only strokes also, where only the outlines will be visible. Okay, this I don't think you should touch this. I think I kept it independent. Add intersection markers. I'll show what can be. I'll show how this script works basically. Okay, I'll just do generate. Okay, see, this has generated a whole grid. Okay, as you can see, vertical dividers there are 3, 1, 2, 3. 2 horizontal dividers, 1, 2. ठीक है. This null, the blue nulls तुम्हारे vertical को control कर रहे हैं. ठीक है. The pink ones are responsible for your horizontal ones. Alright, ये तुम्हारे nulls हो गए, ठीक है. Then you have the strokes. Yeah, these are the strokes. Okay, the stroke layers. And then you have, okay, this is the vertical stroke. ये blue वाले तुम्हारे vertical stroke है. पिंक वाले आर योर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है. दिस इज योर मेन नल. ये नल है. आई डोंट थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट, पता नहीं क्यों बना हुआ है, बट हाँ, आई डोंट थिंक दे हैव क्रिएटेड सेल्स फॉर सम रीजन. लेट मी चेक. ओनली स्ट्रोक. ओके, I initially set it to only strokes. So this is what happens when you select only strokes, and these are the settings. Okay, now let me just remove all these. We'll start again. I'll do strokes plus cells. Now cells will also be generated at the same time. Okay, generate. Now same thing, nulls for each stroke. We have strokes, we have cells also. So as you can see, these are the cells. Okay, now what you can do is, for example, you have a text here. Okay, I'll say, "Oi boy." Okay, just change the font here, for example. ठीक है, this is the text layer. Okay, and now what we want to do is we want to attach or maybe parent this text layer to this cell so that it is attached to this cell. Okay, at the same time it's only visible in this cell. Okay, so track mat to this cell as well. So where's this cell? This cell is cell 10. Okay, so we'll just bring our text layer close to it. Cell 10. Okay, we'll, oh fuck, I have changed the null. Yeah, this one to cell 10. We'll parent it, and at the same time we'll track mat it. Okay, that way you can just enable this also. Cell ka you can change the color also, by the way. Okay, done. Now notice that these cells also move with these nulls. Okay, so you can animate these. Okay, for example, position initial, sorry, 1 second after this position, the position is this, and before you can have this position. Something you can do with the vertical one also. Position, this is the final position. This one is the let's say initial position. You can do something with this also. For example,
This one is the final position. This one is the beginning, the starting position. You can just easy ease all of these. Create a graph like this. Simple. Okay, and you can just, even offset them a bit. For example, this will create something interesting. Okay. See, that's how you create. Okay, now you can have another text layer, another shape layer, anything, any image or something like that, and you can just track mat it to this cell, null it to this, parent it to this this cell, and you can just do everything, whatever you want with this dynamic grid script. Okay, it was €7 worth. Very good investment, I feel. It's very cheap. Okay, one thing I want to show is add intersection markers. What you can do is when you just select it, you can just go to settings and where intersection markers. For example, you can select 4 options. Either the intersection of each stroke will be like a dot circle, it can be dot square, it can be pre-comps, it can be nulls. So the intersection can also be a null or a pre-comp. It goes up to that level. For reference, I'll just use a dot square here. Okay, and the size will be 10. Okay, and I'll generate. See, we have got at every intersection we have got squares here. Now you can of course change the setting of these squares also. For example, you can just rotate them like, for example, 90 degrees. Okay, for example, this. Okay, this can be the case, or you can scale it up as well. Okay, what else can you do? I think you can change the color of this as well. I am not able to. Yeah. So it's a shape layer, so you can just change the color also. Okay, you can remove the stroke also. Okay. What I did was I added a pucker and bloat. Okay, and I did this. Remove the stroke, and that's how I created each and every intersection like this. Okay, as you can see, that's what I did. Simple. I think it's pretty much easier. Like, it's pretty much clear what has to be done here. Okay, now I think 60% of the grid animation is covered. I think you guys know how I did it. Okay, so I created a grid. Okay, and I animated all these strokes in a very random manner. Okay, this training part was connected to this cell, and it was track matted as well. Okay, then we had this blue background. Okay, these 3 blue backgrounds, they were connected to each of their own cell. Each cell has its own UI animation also. Okay, of course the UI animation was connected to the blue background, which is connected to the cell. So ultimately everything was happening according to the cell. Everything was moving according to the according to the way how I animated the cells and the strokes. Okay, done. Then I animated the strokes here again. I animated the UI, change of scene. I animated the strokes. I animated the cells. I animated the UI and the background inside those cells. Done. And similarly, I did for here as well. That's how you create the grid animation. As simple as that. No rocket science here. Okay. You can just simply, if you want, you can have this text again, and you can just remove the background also. For example, you can connect to this cell, which is cell number 6. Okay, so you can just track mat it to cell number 6, parent it to cell number 6. Okay, now if you move this, whatever you do, whatever the fuck you want to do, you can just animate something like this. Okay,
you can do a lot of things. Okay, you can just change this part also, color. Okay, stroke, you can make it big. Okay, endless opportunity. I mean, endless options. You can do anything you want with this. You can say pucker and bloat. You can make something like this also. Okay, whatever the fuck you want to do. Okay, I am just doing very random shit here. Okay, ये हो जाएगा, हो गया. That's how you make the grid, and this is all very responsive. Okay, ये तुम्हारे, this won't alter your text and shape. उसको ऐसा stretch या squish नहीं करेगा, ठीक है? Since it's track matted also, it'll like disappear behind it if you just fully collapse the whole thing. Okay, and that's how you do it. As simple as that. Ta-da! Grid animation is over. That's how I did the grid animation. Match cut. हम आ जाते हैं अपनी ब्लू लाइटिंग पर वापसी, बिकॉज हमने कर लिया है भाई सबसे डिफिकल्ट पार्ट. आजा, आ गए ब्लू लाइटिंग पे. नॉर्मल मोड, इजी मोड बॉयज, इजी है. लेट्स गो. यार कंधे में दर्द हो गया. ठीक है बॉयज, आई थिंक प्लीज चैट में, प्लीज एवरीवन, प्लीज टेल मी इफ द ग्रिड एनिमेशन वाज क्लियर और नॉट. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज. प्लीज टेल मी. All right, I think it's pretty much clear. I think. All right, boys, thank you so much. समझ आ गया तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है. Moving forward, $7 की दाल देंगे यार. चलो फ्री में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. I'll do a giveaway. एक सिंपल इजी सा गिवअवे करूँगा स्क्रिप्ट का. कर देंगे, कोई सीन नहीं है. All right, then I think it's pretty clear. We did a simple match cut here. This is again an AI generated video. Okay. Simple match cut, simple text animation that I've done. Now this opens up. As you can see, this is glass material, by the way. This opens up and this reveals this text. Again, another match cut, very simple match cut. Text animation with those shape layer boxes that I showed you on the first, like in the beginning 5 minutes. Okay. Text, and this is nothing, this part is nothing but just pictures stacking on each other. Okay, I'll show you. See, these are the images. The orange layers, these are the images. Okay, and it's nothing but just simple montage, nothing else. Like cut. Okay, each of them, they are connected with a null, and the null is just scaling up. No, I don't think the null is scaling up. I think the images are scaling up. Whatever it is, it's a very basic effect. No rocket science involved here. Okay. And also, I am moving these shape boxes accordingly with these pictures as if it's expanding together. Okay. And that's how I created this cut. And this was my part. This was fully my part. इसके बाद वाला पार्ट बेकार है. वी डोंट नीड दैट. ओके, बहुत ईजी सा है, बहुत टट्टी सा है वो. दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू कवर हियर इन दिस. ओके, जो भी अच्छा पार्ट था, विच एवर वाज द डिफिकल्ट पार्ट एंड लाइक द मेन पार्ट ऑफ द होल वीडियो, इट हैज बीन कवर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, any questions, anything you want to say about this breakdown, anything, any comments you have? Okay, I hope
you guys understood this whole breakdown. I tried my level best to explain each and everything about the colorama thing. I taught you some things about the colorama also, depth map also, this grid thing also. It's a 7 euro script, 700 रुपए का मतलब 700 rupees. Very cheap, I would say, very cheap and very useful, like, and very easy to use also. Like, you see, like the way I explained also, as you can, like, you understood also, it's very easy to use. So I think it's a good script to invest in also. And yeah, this was pretty much it. This is how I made this SaaS launch. How is it, boys? How is it? Tell me. Tell me. हटाओ इस पैंचोत को, सेव करो. I am just checking the chats. Thanks, done. Have you understood? Learn new things about Colorama? Yes, sir. Did you generate the AI videos or client gave? I generated the AI videos using Hexfield. Breakdown is better than tutorials. 100%. मैं तो हर दिन बोलता हूँ, my breakdowns are much easier than tutorials. Extraordinary, fantastic, mind blowing, sir. Thanks, Lan. जाते जाते एक और टिप्स दे जाना गांड फाड़ सी. Of course, my man, of course. भाई अब जो लोग टॉप एडिटर पे हैं, बैठे हैं, वो लोग इतने फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, इतना कनेक्शन है, एंड वो लोग कोर्स बेच रहे हैं. चूतिए हैं साले. There's a fucking crazy, that's fucking crazy, man. Learn so much things. My pleasure, bro. My pleasure. भाई मजा आया. Came to know it's all about doing it rather than thinking about it. Exactly. Just do it. Just fucking do it. Over explained. W. What is your target? Why are you doing for free tutorials? And what is dream in the future? तगड़ा क्वेश्चन पूछा भाई ने. सोच के बताता हूँ ब्रो. इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है भाई? Pinterest and all. Pinterest is the main inspiration hub, I feel, for all these things. Nice भाई. Grid script name is dynamic grid. Let me just type it in the chat. Dynamic grid. Pin कर देते हैं. I'll just pin it. Yeah. I have pinned the chat. ब्रो अगर साउंड डिजाइन का स्टीम मांगू तो गाली दोगे? स्टीम अच्छा स्ट्रीम साउंड डिजाइन का हाँ कर देंगे, वो भी कर देंगे समडे. डोंट वरी अबाउट इट भाई. हम जैसे गरीबों को आपने कुछ सोच है. समझ नहीं आया पाजी की कहते हो. Do you think plugins can make what you just showed? Because I remember having a moment where I designed everything from scratch and another person created using plugins. Yours take. Yeah, obviously plugins are here to help you. Obviously, I mean there's no competition, okay? And मैं तो कहता हूँ use as much plugins and script as much as you can, okay? I use Claude to generate my own scripts on a daily basis, okay? Bro, they are made to reduce your workload, as simple as that. And I feel that's my personal opinion. You are stupid if you're doing everything from scratch. मत करो भाई सब कुछ स्क्रैच से. थोड़ा सा स्मार्ट खेलो. थोड़ा हार्ड वर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो. Making everything from scratch is hard work, is redundant hard work. Making scripts and plugins on each and everything and using them is smart work. That's what I say. Stems मांग रही सी. Oh, stems मांग रही. पैन चो. Stems किथे लावा? Dream is to make our parents happy and fulfill their and also our wishes. That's all. Yeah. Are you Punjabi? ना भाई बस माड़ी मोटी समझ आती सी और तो कुछ नहीं. Use and
create plugin script. It's fun and also helps a lot. Exactly. और बताओ बॉयज, भाई व्यूअर कितने आ रहे हैं भाई? क्या चल रही है इस बारी? कितनी जनता बैठी है आज? आज मैं गांड मस्ती ज़्यादा नहीं कर रहा ना, आज मैं बहन चो सीरियस बातें कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा पता नहीं कितने लोग बैठे हैं अभी। 63 1.3 के व्यूज़ ऐसे ही हो गए स्ट्रीम के। नॉइस नॉइस। और क्या है ब्रो, मेरे को आपके अंडर काम करना है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दिसंबर तक, आपके यहाँ अप्लाई करूँगा इन जनवरी। मेरे को काम सीखना है, एज यू सेड, डू जॉब बिफोर गेटिंग इनटू फ्रीलांस। गुड जॉब, दैट्स अ गुड स्मार्ट वे टू अप्रोच थिंग्स, आई लाइक इट। भाई आपने पिछले दिन बोला था कि आप टीम में तभी लेंगे जब आप पोर्टफोलियो अच्छा होगा, पर मैं कह रहा था सर मैं बिल्कुल न्यू हूं, मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ काम करके पोर्टफोलियो बनाऊं। ब्रो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज आई नो, आई मीन इट्स लाइक if you're a beginner or something, you should focus on learning first and then get a job at a place where you can create stuff, at the same time grow, okay, but at a slightly beginner to intermediate level. Okay, what we do, we work with slightly above than intermediate people जिनको थोड़ा सा experience है इस field में, ठीक है? Because what happens is when we are tackling a lot like serious clients, like serious clients, what happens is we don't have room for people with less experience, because that can sabotage the project and that can ruin my relations with the client. Okay, so that is something which is a huge risk, and that is something that I'm not willing to, and a lot of people are not willing to take. So my advice would be to join a company, join an agency or something like that, where you can learn, you can gain experience, you can make a portfolio. At the same time, being a beginner and intermediate, you can work on your skills as well. That would be my advice to you. And that's what I did also. Breakdown देख कर भाग गए। हट चुप, मादर चुप। थोड़ा यार कैमरा बड़ा कर देते हैं ना। और क्या चल रहा है? All nerds here today. Yes sir. Bhai, how many years did you? There are so many grid come with dynamic. हाँ, ये ही का राज क्या है? कब तक ठीक होने का कहा डॉक ने? भाई विश यू स्पीडी रिकवरी। अरे भाई ये ही उसका है भाई, माइकल जैक्सन का, बिली जीन में करता है ना वो, ही वहां से सीखा हूं मैं, ये मजा आता है। ब्रो मैंने भी एक सॉन्ग बीजीएम के लिए एक स्क्रिप्ट किया है, या फिर फ्री है लाइक जो सॉन्ग एडिट करते हैं। ब्रो व्हेन डिड यू लैंड योर फर्स्ट एवर क्लाइंट? लास्ट ईयर, मतलब गोरा तो मैंने लास्ट ईयर लैंड किया था। भाई स्क्रिप्ट दे दो मेरे को प्लीज। व्हाट प्लगइन्स डू यू प्रेफर ऑन डे टू डे बेसिस? लास्ट स्ट्रीम आई शोड माय प्लगइन्स आल्सो, सो यू कैन चेक दैट आउट प्लीज। लव यू ब्रो, लव यू भाई। डू अ वीडियो रिव्यू नेक्स्ट स्ट्रीम। यस डन है। ब्रो व्हेन डिड यू लैंड? भाई कैमरा तो बड़ा कर लोगे, बट नुन्नू का क्या? बात तो सही है, वेरी डीप। हाँ वेरी डीप। नुन्नू बड़ा नहीं हो सकता, कैमरा कितना ही बड़ा कर लो, हाइट कितनी बड़ी कर लो, नुन्नू बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए नुन्नू की हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। When I search for dynamic grid, a lot of results show up. मुझे याद नहीं किसका है यार, मैं लिंक भेज दूंगा। I'll attach a link. Bro, my entire freelance career just you. 2 months ago, I just dropped out of school for that only by inspiring you. I don't know how I tell you thanks. I really, bro. I never said to drop out of school. In fact, you should never drop out from school, colleges. Okay. Thank you so much for those kind words. But please, I would suggest do not drop out from schools. Please, mere veer. What's your Mac and how much did you do? Thanks for the breakdown. By that helped a lot. How hard was it for you to find editors for your team? Because there was a time when I was looking for some editors and most of them either lagged in this because of the communication was lapping. ठीक है, I mean you have to take bet on some editors that you like. Okay, of course उनमें से बहुत लोग चूतिया निकलेंगे और निकले भी हैं। किसी दिन उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, हाउ कुछ एडिटर्स ने मेरी गांड भी मारी है भाई, मतलब बस क्या बताएं, किसी दिन करेंगे बात उस बारे में भी। बढ़िया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई लर्न माई लेसन।
भाई किसी को भी अप्रोच करा तो वो भी बोलना है कि ट्रांसप्लांट तो हो सकता है भाई, ट्रांसप्लांट बालों का होता है भाई। हाइट वर्सेस स्टैमिना, व्हाट्स योर टेक? स्टैमिना, स्टैमिना, आई से स्टैमिना भाई। एटलीस्ट स्कूल तो कर लेता, और क्या भाई, स्कूल की छोड़ दिया भाई, स्कूल की छोड़ दिया। स्कूल नहीं छोड़ना होता है भाई, कॉलेज भी नहीं छोड़ना, मैं तो कहता हूँ भाई। मैच कैट करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज को एक्सप्लेन कर दो प्लीज। नेक्स्ट वीडियो आज का हो गया आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, छोड़े। वहां की बात वहां करेंगे, यहाँ की बात यहाँ नहीं। यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे यही बात करेंगे, वहां की बात वहां करेंगे। योर थॉट्स ऑन 13-14 years वीडियो एडिटर्स एंड डूइंग 10K रेवेन्यू पर मंथ। लौड़ा मेरे यहाँ बैठ जाओ, चूतिया साले, 13-14 साल के 10-10 साल चूतिया साले। मत माना करो भाई ऐसी बातें सोशल मीडिया पे, चुतिया पे चल रहे हैं ये। तुम सिर्फ कोर्सेज बेचने की टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं है ये, ठीक है। मैं एक एक का पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ कि क्या स्कैम है और क्या रियल है, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साउंड्स अनबिलीवेबल, नहीं ऐसा नहीं है, ये रियल है, ये चुतियाप है और लोग चुतिया बन रहे हैं। कोर्सेज बेचने के टैक्टिक्स हैं ये, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कोर्सेज बेचने के टैक्टिक्स हैं। देपांश भाई डोंट ट्रिगर हिम। सी ये गौरव भाई अभी मेरे को जानते हैं, कुछ जनता है जो मेरे को जानती है यहाँ पे, कि उनको पता है कि भाई मैं किस बात पे गाना मार सकता हूँ और किस बात में बढ़िया रिप्लाई दे सकता हूँ। तो गुड जॉब। आई थिंक मैंने कल्ट ऑडियंस थोड़ी सी तो बना ली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये बात जान के कि कुछ लोगों को पता है मेरे बारे में। चलो पर्सनली लवी पाजी, $3,000 का काम है, सोच रहा हूँ M5 Max मैं लेने का सोच रहा हूँ। कोई एडवाइस बता दो, इग्नोर मत कर दे भाई, एक तो मेरा गला सूख गया। M5 Max ले ले भाई, गुड है, अच्छा है। W लाइफ थैंक यू ट्रू भाई। स्टैमिना टेस्ट करने के लिए छोकरी लगती है और छोकरी बनाऊं को नहीं मिलती, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाउ मच इज ओके। डू यू यूज ब्लेंडर इन योर प्रोजेक्ट और ओनली? आई डोंट यूज ब्लेंडर एज सच। मत कर बेटा मत कर। एग्जैक्टली बेटा, कुछ जनता समझ जाती है कि भाई हमारा गांड मार ली जाएगी, इसलिए ना पंगे लो। बट anyways boys, this was I feel a good stream. Okay, I think I've covered a full as SaaS project video. Okay, it is good stream, breakdown अच्छा था। I hope सबको सब कुछ समझ आ गया हो, थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि like how does the project work, how I work in After Effects and everything. Grids को लेके I will share a link definitely in my Discord server, so do join the Discord server and yeah, that's pretty much it. Thank you so much for joining. A lot of talking head videos are coming in. Live streams will be much regular. Next live stream पे we'll do some edit reviews और थोड़ा हम live SaaS videos भी बनाएंगे. Okay, like we'll make like real SaaS videos from scratch. Okay, Pinterest से references उठा के एक mood board बनाएंगे. Then we'll make a storyboard. We'll take a sample script also, and then we'll make the whole thing from scratch. ठीक है, we'll keep it as a series. Okay, दिन में मतलब दो 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स रहेगी and we'll make whatever we can make. Okay, so yeah, and yes, I will not forget the Diet Coke. Thank you so much for all the people who donated something today. Thank you so much Gaurav, thank you so much Ansh, I remember these two names. I think आज 2 ही super chats आई हैं, but all good. Thank you so much for joining guys. The viewership was good today. I think we touched 73 consistently. So yeah. And yes, Abhishek's coffee also. मैं भूल जाता हूँ हर बार। अभिषेक की कॉफी का मैं स्क्रीनशॉट फोटो डाल के ट्विटर पे भी पोस्ट करूँगा, टैग कर दूँगा, कोई सीन नहीं है। Alright. Anyways boys, this is it from my side. With boy signing off. Take care. Good night. Have a good sleep. Sleep is very important. जाते आते एक एडवाइस, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। अगर तुम्हारे अंदर एक्सपेरिमेंट करने का विल नहीं है, अगर तुम्हें लगता है ये स्टाइल अच्छा है तो ये फॉलो कर लेता हूँ, इफ यू फील दिस स्टाइल इज गुड आई फॉलो दिस, इफ यू फील दिस स्टाइल इज गुड आई फॉलो दिस, देन यू आर नॉट अ क्रिएटिव गाय। क्रिएटिव गाय के अंदर एक क्रिएटिव बंदे के अंदर सबसे बड़ी चुल होती है टू एक्सपेरिमेंट।
Okay, if you don't have that zeal to experiment in your own life, whether it be After Effects, whether it be storyboarding, whether it be fucking doing anything in your life, then you're not a creative person. Note that. With that, good night. Peace. With boy out. Hello.